warming, Swayamsiddha Abhiyan, in order for overall development of students. As we know that United Nations Environmental Program has agenda, it has been accepted by all the countries to achieve sustainable development up to 2030. As we talk about the development, we have been focused much on the development, but not on the deployment, which is going on together. With the deployment, the development, land degradation, pollution, deforestation, and so many other problems are experiencing. So what is sustainable development? What are its goals and how to achieve it and preserve the resources and conserve the environment? All this will be discussed in today's conference. And for that, we are very much lucky to have with us two eminent personalities, Dr. Sonam Somasi and Dr. Shweta Khandelwal, Madam. I am very much thankful to both of you for your consent for this program. Once again, I am very much thankful to Dr. Sunil Kulkarni, sir, Director, Student Development, Kaviyatri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, for giving us a chance to organize this webinar on this burning issue of the world and India, that is sustainable development. I wish this conference will make our students more aware for sustainable development. Thank you. Thank you so much. धन्यवाद मॅडम. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते प्राध्यापक डॉक्टर सुनील कुलकर्णी सरांचा परिचय मी थोडक्यात करून देतो. प्राध्यापक डॉक्टर सुनील बाबूलाव कुलकर्णी, प्रोफेसर एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष तथा संचालक विद्यार्थी विकास कवयित्री बहिणाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जळगाव महाराष्ट्र. सर कबोचो उमवी विद्यापीठ जळगाव येथे प्रोफेसर पदी नियुक्त आहेत. सरांचा सेवा कार्यानुभव 24 वर्ष इतकं दीर्घ त्यांनी कार्य केलेलं आहे. त्यांचे प्रकाशित साहित्य पुढील प्रमाणे: कबीर और तुकाराम के काव्य में प्रगतिशील चेतना, 2 समकालीन साहित्य विमर्श, 3 सामाजिक समरसता के अग्रदूत संत कबीर, 4 भाषिक संप्रेषण, 5 हिंदी लेखन कौशल्य विकास और प्रयोजनमूलकता, और अनुदित पुस्तकें: एक ढोता हूं कविता की पालकी, मराठी से हिंदी में अनुवादित काव्य संकलन, दमन, मराठी से हिंदी में अनुदित काव्य संकलन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्तित्व के विविध पहलू, व्हाट्सएप और प्रणालियों की अन्य कथाएं, मराठी से हिंदी में अनुवादित बाल कथा संकलन इत्यादि बहुत सी पुस्तकें सर ने लिखी हुई है. और कुछ किताबें जो है उनकी पाठ्य पुस्तक के रूप में आई हुई है. कथेतर गद्य विधाय BA द्वितीय वर्ष कला हिंदी, श्रेष्ठ हिंदी एकांकिका BA द्वितीय वर्ष कला हिंदी, गीत नवगीत संकलन BA द्वितीय वर्ष कला हिंदी. सर का शोध परियोजना में भी बहुत सहभाग रहा हुआ है. विदेश यात्रा, प्रकाशित शोध निबंध 8 से 10 सर के प्रकाशित हुए हैं इत्यादि बहुत से उनके प्रकाशित शोध निबंध है. सर अनेक गतिविधियों में सहभागी रहते हैं और उनका व्यक्तिमत्व जो है अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु नहीं है. ऐसे हमारे आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता प्राध्यापक श्री सुनील कुलकर्णी जी, उनका मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य YD देसले सरांचा परिचय प्राध्यापक सूर्यवंशी सर करून देतील. प्राध्यापक सूर्यवंशी सर. सर अनम्यूट करा. सूर्यवंशी सर. हाँ हेलो सर.
देसले सरांचा परिचय की आमचे देसले सर आमच्या कॉलेजचे व्हाईस प्रिन्सिपल आहेत. तसेच त्यांचा साहित्याबद्दल थोडासा चांगला अभ्यास आहे आणि ते चांगले खेळाडू आहेत, असं थोडक्यात परिचय मी करतो. यानंतर आजचे जे प्रमुख पाहुणे आहेत डॉक्टर सुनील कुलकर्णी सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन करावे. नमस्कार, आवाज आ रही है? आ रही सर. पीके कोटेचा महाविद्यालय भुसावळ तथा कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के विद्यार्थी विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय वेबिनार में उपस्थित महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य देसले सर, इस समारोह हेतु या वेबिनार हेतु उपस्थित महाविद्यालय के सभी अन्य अध्यापकगण, मित्र, छात्र एवं छात्राओं, मैं जानता हूं कि ये छात्राओं का कॉलेज है, इसलिए छात्राएं ही मेरे सामने अधिक मात्रा में उपस्थित रही होगी। मित्रों, राजभवन से जो एक परिपत्रक विद्यार्थी विकास विभाग को मिला था और उसमें राजभवन के द्वारा कुछ कार्यक्रम विश्वविद्यालय को करने के लिए कहा गया था, उस पत्र के आधार पर विद्यार्थी विकास विभाग ने इस वर्ष जो नियमित कार्यक्रम है, उन नियमित कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम जो है, जो अपने परंपरागत रूप से चलते हैं, वो तो दिए ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो राजभवन ने निर्देशित किए थे, ऐसे कुछ कार्यक्रम भी इस वर्ष नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए हैं और उसके लिए भी कुछ एक राशि का प्रावधान विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। हम ये जानते हैं कि विश्वविद्यालय का ये विद्यार्थी विकास विभाग प्रायः विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहा है और उस व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी कुछ करना संभव है, वो हर संभव प्रयास जो है वो विद्यार्थी विकास विभाग ने आज तक किए हुए हमें और आपको दिखाई देंगे। उसी कड़ी का एक भाग आप कहेंगे कि आप में नृत्य, अभिनय, वाद विवाद, वक्तृत्व, संगीत, ज्ञान, चित्रकला, आर्ट या अन्य अन्य कलाएं, ललित और ललितेतर विधा के अंतर्गत जितनी भी कलाएं आती है, उन कलाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रायः कई प्रकार के कार्यशालाओं का आयोजन छात्रों के लिए करता रहा है। उन आयोजन के पीछे विश्वविद्यालय की भूमिका यही है कि अधिकाधिक छात्र जो है वो इसका लाभ उठाएं और लाभ उठाने के साथ साथ यहाँ कार्यशाला में अपना सक्रिय योगदान देकर कार्यशाला में प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास साधने का प्रयास करें, उसके लिए प्रयत्न करें। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि 5 लाख से लेकर 50 लाख तक की राशि विश्वविद्यालय जो है वह इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर खर्च करता रहा है।
राजभवन से जो कार्यक्रम हमें इसमें मिले थे, उसका संकेत मात्र मैं कर रहा हूं कि जो उन्हीं में से एक कार्यक्रम ये शाश्वत विकास का है। उन्होंने ऐसे निर्देश दिए थे कि नियमित कार्यक्रम के साथ साथ जो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिन विषयों पर चिंतन होना चाहिए, जिन विषयों पर चिंतन और मनन होना चाहिए, या जो विषय छात्रों की राष्ट्र की ओर देखने की दृष्टि को विकसित कर पाएंगे, उन विषयों को खास तौर से इस प्रकार के कार्यशाला और वेबिनार के माध्यम से विचारार्थ रखा जाए। और उसी के अंतर्गत हमने, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, नई शिक्षा नीति हो, या वृक्ष मित्र अभियान हो, या मेरे कल्पना का जो विश्वविद्यालय है, आगे भविष्य में 25 साल के बाद मैं अपने विश्वविद्यालय की कल्पना कैसे करता हूं, माझ्या कल्पनेतलं विद्यापीठ, ये उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है, शाश्वत विकास। और ये रखने के पीछे की भूमिका यह है कि जिस बाजारवाद के दौर में हम जी रहे हैं, भूमंडलीकरण इन दिनों हम पर हावी है, और इसलिए विज्ञान की सहायता से जिन जिन चीजों को हमने बनाया, वो सारी चीजें आम आदमी के लिए सर्वसुलभ हो, इस दृष्टि से कई सारे प्रयास किए गए। और इसी का नतीजा हम ये देख रहे हैं कि बाजारवाद आज पूरी तरह से फैल चुका है। बाजार का ये जो स्वरूप है, वह स्वरूप अत्यंत विशाल है, और उस स्वरूप ने हमें इतना प्रभावित किया है कि आज एक भी घटक जो है वह उससे अप्रभावित अपने आप को नहीं रख सकता है। और बाजार में उन चीजों का अधिक बोलबाला आपको देखने को मिलेगा कि जो चीजें शाश्वत नहीं है, स्थायी सुख की प्राप्ति उसके माध्यम से हम कर सकते हैं, ऐसी चीजें बाजार में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। अधिकतर चीजें आपको इस बाजार की व्यवस्था में ऐसे देखने को मिलेगी कि जो यूज एंड थ्रो का नारा हमें लगाती है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। कल हम हमारे कॉमर्स और मैनेजमेंट के अधिष्ठाता मित्रवर्य डोंगरे सर से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि अब विदेशों में मोबाइल भी जो है वो यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कि एक बार उसका उपयोग किया तो छोड़ दिया। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें या कई सारी वस्तुओं ने, कई सारे पदार्थों ने प्रवेश किया है, और उनमें हमें कहीं पर भी शाश्वतता दिखाई नहीं देती है। इंस्टेंट का ये जमाना है, जैसे इंस्टेंट चीजें हमें पसंद आती है, और उसी के कारण जो है वो बाजार गरमा रहा है। ये विषय आपके सामने विचारार्थ रखने के पीछे
राजभवन हो या विश्वविद्यालय हो, उसकी भूमिका यही है, उसका उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी जो है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सीखे, समझे, जाने, पहचाने। आप देखेंगे कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हम उपयोग करते हैं कि जिनके बारे में हमें बहुत सोचते नहीं है, पर यदि हमें पर्यावरण का संतुलन रखना है, हमें अगर प्रदूषण को रोकना है, हमें अगर लगता है कि बरसात ठीक समय पर आनी चाहिए और ठीक समय पर रुकनी भी चाहिए, क्योंकि जितना वर्षा का ठीक समय पर आना अत्यावश्यक है, उतना ही ठीक समय पर उसका रुकना भी अत्यावश्यक है, अन्यथा वह सब चीजें तहस नहस कर देती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिजीवी लोग ऐसा कहते हैं कि उसके लिए हमें शाश्वत विकास की ओर देखना चाहिए। ऐसी चीजों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि जो सस्टेन की जा सकती है और जो शाश्वत है। एक समय था कि हम बिजली और पानी को और ऑक्सीजन को शाश्वत मानते थे। कितना भी उपयोग किया तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, ये खत्म होने वाली चीज थोड़ी है, ऐसा हमें लगता था। लेकिन हमने देखा कि जब इसकी कमी महसूस होती है तो लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में हमने देखा ऑक्सीजन की किल्लत होने पर कैसे उसको बेभाव जो है वो बेचा और खरीदा जाता था। धूप में ग्रीष्म काल में जब गर्मी बढ़ती है तो कैसे बिजली 2-2 4-4 घंटे हमसे छुटकारा ले लेती है। ये चीजें मित्रों देखने के लिए तो हमें शाश्वत लगता है, मार्गदर्शन करने वाले। आवाज आ रही है सर? सर आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, थोड़ा कट गया था। मैं ये कह रहा था कि मैं इस विषय का आधिकारिक पुरुष नहीं हूं, विषय विशेषज्ञ नहीं हूं, या इस विषय को लेकर मेरा कोई एक स्वतंत्र चिंतन है, ऐसी भी बात नहीं है। पर जिस अनुपात में मैंने इस विषय को जानने और समझने की कोशिश की है, उस पर से मुझे केवल इतना ध्यान में आया है कि आज शाश्वत विकास की हमें बहुत आवश्यकता है।
मैंने एक छोटी सी कविता इस विषय में लिखी थी कि कैसे आज दिन ब दिन जो है वो ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जा रहा है। आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा। जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा और दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का नारा। हर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान और रोटी से भी डबल रोटी लग रही महान। घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम और निरुपयोगी बूढ़े सारे जा रहे आश्रम। बरसात के ना आने पर बढ़ रहा है गम और जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। एमए एमफिल पीएचडी हुआ फिर भी लग रहा है कम। सेट होकर नेट भी देकर नहीं मिल रहा है वेतन। और ये ऐसी लंबी कविता है। उसका अंत इस तरह से इस छंद से किया गया है कि पहली से ही फड़क रहे हैं अंग्रेजी के निशान और मातृभूमि और संस्कृति का घट रहा है प्रमाण। ये पूरी कविता जो है वो इस शाश्वत विकास का एक संदेश आपको देती है। शाश्वत विकास के आग्रह को आपके सामने प्रस्तुत करती है, रखती है, उसका समर्थन करती है। और इसलिए मित्रों, आज के इस पूरे कार्यशाला में मैं ये अपेक्षा करूंगा कि खास तौर से जो युवा छात्राएं हैं, वो युवा छात्राएं इस विषय को गंभीरता से समझ ले। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि एक पुरुष अगर सीखता है तो बस वो वहीं तक सीमित रहता है, लेकिन महिला जब सीखती है या औरत जब सीखती है तो वो दोनों कुलों का उद्धार अपने ज्ञान के सहारे कर सकती है, मायके का भी और ससुराल का भी। और इसलिए ये जो शाश्वत विकास है, इस शाश्वत विकास की मूल अवधारणा को इस वेबिनार के माध्यम से आप समझेंगे, जान लेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं आज के अन्य वक्ताओं के बीच और आपके बीच अधिक समय न लेते हुए पहले औपचारिक रूप से ये उद्घाटन या ये उद्घोषणा कर देता हूं कि इस वेबिनार का उद्घाटन जो है वह संपन्न हुआ है और आगे दिन भर आप जो चर्चा करने वाले हैं, अलग अलग विषयों को लेकर जो बातें इस पूरे दिन भर के वेबिनार में होने वाली है, मैं ये चाहता हूं कि वो बातें महज एक प्रलाप बनकर न रह जाए, उसे समझ बूझकर हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। मनुष्य जीवन में ऐसे कई सारे स्वप्न होते हैं, कई सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं होती है, कई सारी अभिलाषाएं होती है कि जो मनुष्य को लगता है कि वो यथावत बनी रहे, वो उसका कभी भी क्षय ना हो,
वो अक्षय बनी रहे। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो मनुष्य शाश्वत रूप में पाना चाहता है? बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि पल भर के सुख के लिए आदमी न जाने कितने दुखों को न्योता देता है और पूरी जिंदगी में सुख कम दुख ही अधिक सहता रहता है। वैसे मुझे लगता है कि इस विषय के बारे में हमें गंभीर होकर सोचने की आवश्यकता है। जो हरित क्रांति हुई और हरित क्रांति के बाद हमने देखा कि जिसको आप कहेंगे कि सेंद्रिय खेती, ऐसा भी एक आंदोलन जो है वो भारत में हरित क्रांति के बाद खाद्यों का भरपूर उपयोग करने के कारण जब देश की जमीन बंजर होने लगी और उसके भीतर की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम होकर एक स्थिति ऐसी आ गई कि वह नष्ट सी हो गई, तो फिर हमने सेंद्रिय खेती का जो है वो पर्याय शाश्वत विकास के रूप में ढूंढ निकाला। वैसे ही बिजली के बारे में हम सौर ऊर्जा का उदाहरण दे सकते हैं कि हमने देखा कि ये भारत और हमारे इर्द गिर्द के परिसर का अगर हमने अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो यहाँ सबसे ज्यादा धूप होती है। 12 महीने में सबसे ज्यादा अगर क्या रहता है तो यहाँ धूप रहती है। सूर्य की रोशनी एकदम तेज हो जाती है और आप जिस भूसावल में रहते हैं वो भूसावल तो पूरे महाराष्ट्र में तापमान के लिए जाना और पहचाना जाता है। लेकिन वहां भी आप देखेंगे कि उस सूर्य की किरणों का हम यथावत उपयोग नहीं कर पाते, उसका यूटिलाइजेशन हम ठीक तरह से न कर पाने के कारण उसके माध्यम से जो ऊर्जा, जो बिजली हमें मिलनी चाहिए थी, उसका हम यथावत उपयोग नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है। सौर ऊर्जा के कई सारे केंद्र खुले हैं और अभी जो हाल में बजट भारत सरकार के वित्त मंत्री ने घोषित किया है, उस बजट में भी आपने देखा कि सौर ऊर्जा को लेकर काफी सारी सब्सिडी देने का प्रावधान जो है वो उसमें किया गया है। ये देने के पीछे की मूल भावना यही है कि लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें कि जो रिसाइकल बिन से पुनः आ सकती है। एक उदाहरण, एक कथा भारतीय गृहिणी के बारे में प्रायः बताई जाती है कि एक गृहिणी कपड़े का उपयोग कितने ढंग से कर सकती है। मतलब एक वर्ग ऐसा है कि जो कपड़ा एक बार पहनने के बाद दूसरी बार फेंक देता है, लेकिन हमारे यहाँ ये मानसिकता है कि हम वस्तु का पूर्ण रूपेण उपभोग लेने की परंपरा हमारे यहाँ रही है और इसलिए यूज एंड थ्रो की ये संस्कृति जो है वो हमारे यहाँ अधिक पसंद नहीं की जाती है। क्योंकि मुझे पता है कि माँ जब कपड़े पहनती थी तो उसको फटने तक जो है वो पहना जाता था। फटने के बाद भी उसको सीकर जो है, ज्याला मराठीत आपण ठिगळ लावणं म्हणतो, ठिगळ लावून आपण ते वापरायचो
अगर वो कपड़ा पहनने लायक नहीं रहा तो खेत में रोटी बांधकर लेकर जाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। अगर वो उसके भी काम में नहीं रहा तो पोछा लगाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। वो उसके भी काम का नहीं रहा तो बाती के लिए या उसका उपयोग किया जाता था। तो ये जो हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, उस परंपरा का मुझे लगता है कि नई पीढ़ी ने कि जो यूज एंड थ्रो की आदी होने जा रही है, प्लास्टिक का दुरुपयोग कर रही है, ऐसी जो चीजें हैं जिन चीजों से पर्यावरण का ह्रास होता है या पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में बाधाएं उपस्थित होती हैं, उन चीजों को गंभीरता से इस पूरे वेबिनार के माध्यम से आप समझेंगे, बूझेंगे और तभी जाकर ये विषय आज विचारार्थ रखने की सार्थकता जो है वह सिद्ध होगी, ऐसा मुझे लगता है। आज जो कुछ भी वक्ता आपके साथ संबोधित करने वाले हैं, उनको सुनते समय इस कान से सुनना और इस कान से उसको बाहर जाने देना, ऐसा मत कीजिएगा। बहुत कुछ सुनने के बाद भी बहुत बार हमारी व्यवस्था या अवस्था जो है नड़ी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे ऐसी होती है। तो ऐसा न करते हुए आज जो चर्चा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में वक्ताओं के माध्यम से आज की जाने वाली है, उस चर्चा को आपको पहले तो समझ लेना है। समझ लेने के बाद उसको शब्दांकित करना है, रनिंग नोट्स उसमें आप निकालिएगा और फिर उसके आधार पर जो है वो अपना एक 2-4 पन्ने का अभिप्राय जो है वो संयोजक को और विद्यार्थी विकास विभाग को देना है, ताकि जो आपने आपके लिए रखा गया था, सुना गया था, वह किस अनुपात में आप तक पहुंचा है, उसका मूल्यांकन आयोजकों के द्वारा करना सहज संभव होगा। मैं मेरी बात को पूर्ण विराम देते हुए अंत में कोटेचा महाविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सर हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज के इस उद्घाटन सत्र में या वेबिनार के उद्घाटन सत्र में आपने मुझे बुलाया और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर आपके छात्रों के साथ संवाद करने का जो एक अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों थोड़ी व्यस्तता होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से मैं कल के कार्यक्रम में भी परसों के आ नहीं पाया, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मार्च एंड है, एमसी की मीटिंग है और इन सारी चीज़ों में मेरा भी थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा है, अन्य अन्य विषय के कारण और हिंदी अकादमिक के कारण या मेरी जो कॉन्फ्रेंस है उसके कारण। तो उसके लिए भी मैं परसों के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। आज ऑनलाइन था, इसलिए मैं उपस्थित हो पाया हूं। आपने मुझे अवसर देकर जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं और मेरी बात को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर. सरांनी अत्यंत सोप्या आणि साध्या पद्धतीमध्ये शाश्वत विकासाबद्दल माहिती दिलेली आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा ह्रास न करता आर्थिक विकास आपल्याला साधायचा आहे. एकंदरीत त्यांनी आमच्या विद्यार्थिनींना जो मार्गदर्शन दिले मी त्याबद्दल त्यांचा आभारी आहे. मी पुढील आमच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य प्राध्यापक वाय.डी. देसले सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन करावे. हॅलो, आवाज येतोय बालेराव? येतोय सर, येतोय. Okay. Good morning, friends. Today's chief guest, Dr. Sunil Kulkarni, Director, Student Development Department, Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon.
dignitaries, Dr. Yes. Saunan Somoshi and Dr. Shweta Khandelwal, Madam, all the participants, teachers, and students. As a president of this conference, I welcome you all in this webinar, Sustainable Development in India. We have with us youngsters, which are main pillars of our country's development. We know that sustainable development is not a problem in India, but it is a world burning problem. There are so many challenges for its implementation. We had to make development without loss of environment. We had to overcome so many problems like pollution, deforestation, emission. To save the resources and conserve them and to maintain the sustainability, we are gathered today to discuss sustainable development. I welcome both the resource person, Dr. Sonand Somosi sir and Dr. Khandelwal madam. I hope this gathering will be fruitful for all academicians, researchers, and students, and will make our young minds more focused and aware for sustainable development. To maintain the sustainability, we should take care that leave no one behind, so that whatever we have got today from nature and from our ancestors will be there for this generation and generations ahead. Thank you all and thank you again. धन्यवाद सर. मी आजच्या या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शनासाठी आमच्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक सूर्यवंशी सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे. Hello, sir. Hello, everyone. Good morning to all of you. Respected principal, vice principal, resource persons, all dignitaries and delegates, and dear students. It seemed to be great honor to pleasure, note of thanks for inaugural function. First of all, I would like to give my hearty vote of thanks to our today's program president, Honorable Vice Principal, Professor Y.D. Desle, sir, for gracing today's webinar by giving presidential address. Thank you, sir. I would like to thank our distinguished chief guest, Honorable Dr. Sunil Kulkarni, sir, for making this webinar a very meaningful and interesting, as well as given a very useful information about sustainable development in their Hindi language. Thank you, sir. By due permission, we have been fortunate to assisted by our principal, Dr. Mangala Sabadra madam. You have been constant support and you have given a lot of encouragement for all activities. I would like to thank our management of Sri Saraswati Vidya Prasarak Mandal Bhusawal, Program Officer of Student Development, Mrs. Butada madam, and all teachers. By due permission of president of this program, the inaugural session is over. Thank you, sir. Now within 2 minutes, our next program will start. Dr. Saunan Somasi also with us. So I request Balarao sir. To start on a new session, that is session 1. धन्यवाद सर. आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की लवकरात लवकर आपलं आता प्रथम सत्रामध्ये वेबिनार सुरू होणार आहे. प्रथम सत्राचे वेबिनारचे प्रमुख वक्ते आहेत डॉक्टर सोनंद सोमासी. डॉक्टर सोनंद सोमासी लवकरच आपल्याला शाश्वत विकास यावर मार्गदर्शन करणार आहेत. सर जॉईन झाले की आपण सुरुवात करूया. Thank you very much, Dr. Bhalerao, respected principal of this esteemed college of Srimati P.K. Kotecha Mahila Mahavidyalaya Bhusawal, my friend Dr. Sunil Kulkarni, the Director of Student Development in Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon, Professor Y.D. Desle,
dear colleague Dr. Shweta Khandelwal and Professor Subhash Zanke, along with my host, I would say, Dr. Suryavanshi. I thank the college for inviting me और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जो है ये ऐतिहासिक पल में मैं आपका भागीदार हूँ। वो इसलिए क्योंकि सतत विकास जो है हमारे देश का फ्यूचर है, न केवल हमारे देश का बल्कि पूरी दुनिया का, पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है। तो क्या मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपके साथ? सर I'm trying to share my screen. ओके सर, यू शेयर. Just let me know if my screen is visible. विजिबल सर. Okay. So दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये एक ऐसा गोल हम लोगों को दिया गया है, ऐसा टारगेट हम लोगों को दिया गया है जिसमें कि हम लोगों को ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाते हुए न केवल एक चांस सभी को देना है बल्कि सभी के लिए देना है। Therefore, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अप्रोचेस इन अंडरस्टैंडिंग नेशनल डेवलपमेंट। नाउ जब नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम सीमित होते हैं हमारे देश के लिए, राइट? क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है और सबसे आगे है। मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ऑब्जेक्टिव जो है विश्वरूपी है। विश्वरूपी इसलिए क्योंकि ये देश और दुनिया के सीमाओं के परे है। वो इसलिए क्योंकि ये माना गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये हमारे न केवल ह्यूमन बीइंग्स को अफेक्ट करेगा बल्कि लाइफ ऑन अबव द लैंड, बिलो द लैंड, इनसाइड द वाटर एंड इन द आउटर स्पेस, यानी कि चारों जो है पृथ्वी, आकाश और भूलोक जो है, इन तीनों लोगों को अफेक्ट करेगा। और इसी उद्देश्य के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम लोगों को ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम लोग बात करते हैं, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये है एक टू डू लिस्ट, यानी कि हमारे सामने एक लिस्ट बनाया गया है। जैसे हम लोग घरों का बजटिंग करते हैं, घरों के बारे में प्लान करते हैं, हमारे पेरेंट्स घरों के लिए प्लान करते हैं, तो उसी प्रकार से ये एक लिस्ट दिया गया है जो कि हमारे देश और दुनिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड इन द वर्ड्स ऑफ बान की मून, द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टू डू लिस्ट फॉर द प्लैनेट दैट विल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। मतलब ये वो लिस्ट है जो कि दुनिया को बदल देगा। और दुनिया को कैसे बदलेगा? वो इस प्रकार बदलेगा। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, 1990s में शुरू हुआ था। वो इसलिए क्योंकि ब्रुंटलैंड कमीशन करके यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन था जिसमें डेवलपमेंट की व्याख्यान दी गई थी, डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश किया गया था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इनिशियली जो शुरू हुआ है वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट से हुआ है कि भाई इकोनॉमिक वैल्यूएशन जिसका होता है वो डेवलप माना जाता है। फॉर एग्जांपल गरीबी अमीरी, राइट? गरीब देश अमीर देश, इस प्रकार से। तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटिंग में हुआ। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था 1800 में और 1900 में, उसमें क्या हुआ था कि कैपिटलिस्ट पावर्स जो है वो लोगों ने डिफाइन किए थे डेवलपमेंट को, राइट? तो वो उसके कारण जो है उसके साइड इफेक्ट्स रहे, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट पावर्स जो इंडस्ट्रियल पावर्स थे वो लोगों ने जो नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का जो है जरूरत से ज्यादा जो है एक्सप्लॉइट करने के कारण वो डेवलपमेंट जो है एक तरफ का डेवलपमेंट हुआ जिसमें
एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाई, लोगों को हानि पहुंचाई। एक तरफ बहुत अमीर बन गए और दूसरी तरफ बहुत गरीब बन गए। तो बीच के जो गैप था वो धीरे 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 बढ़ता गया। तो ब्रंटलैंड कमीशन जो यूनाइटेड नेशन का था 1990s में, ये शुरुआती तौर पे ये सोचना शुरू किया था और एनवायरनमेंट को और बाकी के चीजों को रखते हुए 1992 में एजेंडा 21 करके रियो डी समिट करके ब्राजील में हुआ था, अर्जेंटीना में। और इसमें जो है हमको एजेंडा 21 करके शुरुआत हुआ था, जिसमें फोकस था, मुद्दा था एनवायरनमेंट के ऊपर, राइट। मगर ये जो डेवलपमेंट का था, जो एक्सपर्ट्स थे, दुनिया के लीडर्स थे, दुनिया के देश और डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स थे, उन लोगों को लगा कि नहीं, ये एजेंडा 21 में भी बहुत सारे मिसिंग पॉइंट्स है। इसीलिए 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जो कि तो आपको याद होगा कि 2000 को हम लोग मिलेनियम ईयर कहे थे, यानी कि सहस्राब्दी वर्ष। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रहते थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वो 15 साल के गोल्स थे, जो कि 2000 से 2015 तक जो है हम लोगों को दिए गए थे। ये भी जो है एक तरीके के स्क्यूड अप्रोच था, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिसिंग थे। तो 2002 में जब वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था, उसमें ये देखा गया है कि हम लोग जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के बाद आगे क्या। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है 2000 से 2015 तक थे, तो उसके आगे का रोड मैप करने के लिए 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने ये निर्णय लिया था कि हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसलिए चाहिए क्योंकि द फ्यूचर वी वांट, दैट इज पोस्ट 2015 का जो फ्यूचर है वो हम लोगों को किस प्रकार होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों को कोई दिशा और दशा बदलने वाली ऐसी पॉलिसीज चाहिए थी। हम लोगों मतलब वेरियस गवर्नमेंट्स, राइट। तो 2015 में हम लोगों के सामने ये टारगेट्स दिया गया था कि 2016 से, यानी 1 जनवरी 2016 से 2030 तक हम लोगों को 17 ऐसे गोल्स दिए गए थे, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए, यानी कि आने वाले जनरेशन्स के लिए एक बेसिक ढांचा बना के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रोड मैप को तय करेंगे। और इसमें बहुत सारे हम लोगों को थीम्स दिए गए थे, यानी टारगेट्स दिए गए थे या गोल्स दिए गए थे। उसके अंदर बहुत सारे टारगेट्स हैं और ये टारगेट्स को असेस करने के लिए हमारे सामने इंडिकेटर्स जो हैं वो दिए गए थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं ये 3 डायमेंशनल है। ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करता है, सोशल डेवलपमेंट की भी बात करता है और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की भी बात करता है। यानी कि इकोनॉमी मतलब पैसा और रिसोर्सेस की डेवलपमेंट की, सोशल मतलब ह्यूमन बींग्स की, और एनवायरमेंट मतलब ह्यूमन बींग्स और इकोनॉमी को जो इफेक्ट करने वाले जो सिस्टम है, दैट इज एनवायरमेंट डेवलपमेंट, राइट, जो हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है। तो जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बने हुए हैं, राइट। बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2015 तक थे, उसको फॉरवर्ड करने के लिए फॉर्मली हम यूनाइटेड नेशंस ने 2015 के सितंबर में न्यूयॉर्क में अडॉप्ट किया था। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पोस्ट 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो हेल्थ पैरामीटर्स में जो एक कंपोनेंट था, उसमें मेरा एक ऑफिशियल बैकग्राउंड पेपर जो है इन पोस्ट 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में एक्सेप्ट हुआ था, और वो एक ऑफिशियल बैकग्राउंड पेपर के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने फॉलो किया था। तो जैसा कि 2015 सितंबर से इसको अडॉप्ट किया था,
1 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ और इसमें जो सिग्नेटरीज थे अमूमन आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कितने सिग्नेटरीज से कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। वो इसलिए थे क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मोस्ट इंक्लूसिव यानी कि सर्वसम्मिलित डेवलपमेंट एजेंडा बनाया गया, देख करके देखा गया था दुनिया भर में। वो क्यों, वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊं। जैसा कि इस स्लाइड में आप देखेंगे कि गोल नंबर 1 से लेकर 17 तक ये गरीबी सबसे पहला गोल रहा है सस्टेनेबल, क्योंकि गरीबी के ऊपर ही सब कुछ आधार है। अगर आप गोल नंबर 1 से गोल नंबर 17 तक अगर आप देखेंगे तो इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है गोल नंबर 1 से लेकर 6 तक, ये है ह्यूमन बीइंग के लाइफ को अफेक्ट करने वाले, राइट। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी मतलब नारी सम्मान और नारी की इक्वालिटी से लेना, और वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता और स्वच्छ जल, ये जो बेसिक ह्यूमन लाइफ से है 1 to 6 है। इसके बाद जो आता है ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करने वाली, क्योंकि जब तक ये चीजें 1 to 6 हम लोग अचीव करते हैं, वो कैसे अचीव करेंगे, वो है 7 to 11 यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है या पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ये क्लीन एनर्जीज पे बेसिस में अगर रहेंगे और अफोर्डेबल रहेंगे तो उसके कारण पर्यावरण और प्रदूषण कमी होगी और डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी अनएम्प्लॉयमेंट और रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉवर्टी और हंगर जो है एम्प्लॉयमेंट से, और डिसेंट वर्क यानी कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो कि एक डिसेंट पैसा दे सके, एक रेगुलर इनकम दे सके इंसानों को। और वो कैसे होगा, क्यों वो इसलिए होगा अगर हम लोगों ने इंडस्ट्रीज, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और इन तीनों के कारण जो है क्या होगा, फाइनली रिड्यूस इनइक्वालिटीज होगा। तो ये सब के कारण 11 से लेकर 14 जो आप गोल्स देखेंगे ये इफेक्ट होते हैं। कैसे, सस्टेनेबल सिटीज, जो कि सिटीज अभी आपने देखा होगा कि द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कि गांव से शहर की तरफ बढ़ने वाले जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो गई। अभी गांव गांव नहीं रहे, द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज ग्रोन अप, राइट। उसके कारण जो सिटीज है या अर्बन स्पेसेस है उनके ऊपर प्रेशर हो रहा है, क्योंकि गांवों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज की तरफ, और जो रिलेटिव पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी है गांवों की वो सिटीज की तरफ बढ़ रही है, और उसके कारण जो है सिटीज में जो पॉवर्टी रिलेटेड और सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ रहे हैं। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स को एक टारगेट दिखा कि सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज जो है वन ऑफ द गोल्स रहने चाहिए, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। जब अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम्स जाहिर सी बात है कि बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई एक हमारा महानगर है या दिल्ली एक महानगर है। विगत कुछ वर्षों में मुंबई और दिल्ली को महानगर क्यों बोला गया है, क्योंकि गांव से शहर जो है मैक्सिमम माइग्रेशन होता है, उसके कारण शहर की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी गांव हो या शहर हो वो एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ पीरियड के लिए एक प्लानिंग होती है। मगर सडन माइग्रेशन के कारण, क्योंकि माइग्रेशन किसी भी कारण से हो, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, गुड लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, डिसेंट वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के कारण होता है, और बहुत सारे बाकी के कारण। तो ये ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी या डिसेंट वर्क के लिए जब लोग जाते हैं
तो सिटी पे प्रेशर बनता है, और इसीलिए जो है सस्टेनेबल सिटीज का कंसेप्ट है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो 7 से 11 के बीच में जो टारगेट्स थे वो अफेक्ट किससे होंगे, वो इन पे होंगे, और उसके कारण कंजम्पशन बढ़ेगा और प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। गांव के ऊपर जब कंजम्पशन जो 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 ओवरऑल कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है, ये दोनों जो है ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वन ऑफ द गोल्स है। क्यों? क्योंकि द एक एस्टिमेट अगर एफएओ के तरफ से हम लोगों ने देखा जाए तो the food loss which is shown or seen in urban areas is much more than in the rural areas, ये वर्ल्ड वाइड। उस कारण से the relative hunger related जो 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 प्रॉब्लम्स हैं वो सब भी बढ़ेंगे। इसके बाद जो 13, 14, 15 गोल्स हैं, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लाइफ बिलो वाटर से रिलेटेड है, और लाइफ ऑन लैंड से रिलेटेड। लाइफ ऑन लैंड मींस नॉट जस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो ऑफ एनिमल्स एंड द लिविंग प्लांट्स। एंड ये 1 से लेकर 15 तक जब हम लोग हासिल करेंगे, उससे क्या होगा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का डेवलप होगा। एंड ये मैंने एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है, ठीक है। और 17th वन जो है ये एक अप्रोच है, क्योंकि गोल नंबर 1 to 16 तभी हासिल होगा जब डिफरेंट सेक्टर्स में पार्टनरशिप होगा, एक समन्वय होगा, और वो समन्वय जो है इसलिए एनविसेज करना जरूरी था क्योंकि इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जो है बाय एंड लार्ज वेरियस गवर्नमेंट्स में, मतलब एक देश से दूसरे देश में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियलाइज नेशन था तो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, अगर यूनाइटेड नेशंस एक सुपर पावर है तो वो क्लाइमेट चेंज ट्रीटीज को साइन नहीं किए थे, तो उस कारण से डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो सीधे सीधे अफेक्ट होते हैं। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 के हैं, उसमें जो गोल नंबर 17 है वो है पार्टनरशिप्स। और ये पार्टनरशिप्स न केवल गवर्नमेंट्स के बीच में होगा, बल्कि गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ये एक अप्रोच है जो कि गोल नंबर 1 to 16 अचीव करने में रहे, राइट। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड ये हम लोग हासिल कैसे करेंगे, 1 सेकेंड, ये तो मैंने आपको बता दिया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ब्रॉड ओवरव्यू दिया। 3 डायमेंशनल है। गोल नंबर 1 to 6 सोशल डेवलपमेंट है, गोल नंबर 7 to 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और गोल नंबर 12 to 15 एनवायरमेंटल इश्यूज है, और गोल नंबर 16 जो गुड गवर्नेंस है एंड मींस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज पार्टनरशिप। ये मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया है, राइट। ये यूनिवर्सल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका विजन जो है। एंड अल्टीमेटली अगर आप लास्ट लाइन देखेंगे, टू लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि कोई भी जो है पीछे नहीं रहे, पिछड़ा नहीं रहे, ये इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ब्रॉड विजन है, और ये यूनाइटेड नेशंस ने इसलिए लिया क्योंकि देश वो डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, या लोग वो रिच हो या पुअर हो, कोई भी पीछे नहीं रहे। उस कारण से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक विजुअलाइज किया गया है, एनविजन किया गया है, और इसी कारण से हम लोग जो हैं आज यहाँ पे बैठे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये गोल्स जो हैं 17 हैं, और इस 17 गोल्स में 169 टारगेट्स हैं, और ये 169 टारगेट्स को इवेल्युएट जो है 231 इंडिकेटर्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं,
जैसे पहला हेल्थ यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जिसमें कि माओ को जो मोर्टेलिटी होती है, माओ में जो मोर्टेलिटी होती है वो एक इंडिकेटर है। जेंडर में इकोनॉमिक पैरिटी जो है उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग है वो एक इंडिकेटर है। एजुकेशन एक इंडिकेटर है। उसी प्रकार से अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट द प्राइमरी लेवल एक इंडिकेटर है, हायर एजुकेशन का एक इंडिकेटर है। तो इस प्रकार से इंडिकेटर्स है। तो जैसे कि गोल्स एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और उसके तहत में 169 टारगेट्स हैं जो कि वे एवरी पीरियोडिकली दे आर असेस्ड। और ये टारगेट जो हैं कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे, 231 इंडिकेटर्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दर्शाते हैं, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज स्टूडेंट्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सब्जेक्ट। आप लोगों को ये समझना जरूरी है, राइट। इसमें जो अगर हम लोग बात करेंगे, 5 P's are important concept of sustainable development goals. Now, what are these 5 P's? First is people. I should not say first, क्योंकि पहला और दूसरा करके होता नहीं है। First is people, because I'm going by what I have written. The second one is planet, यानी कि हमारी भूमि, यानी कि मदर अर्थ। प्रॉस्पेरिटी यानी कि सबका विकास, राइट। पीस शांति, और पार्टनरशिप। ये सब पहले 4 इसीलिए पॉसिबल रहेंगे क्योंकि पार्टनरशिप। सो ये जो 5 P's हैं वो क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि देयर शुड बी नोबडी हु शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, और ये यूनिवर्सल है यानी कि वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है। तो ये 5 P's का जो एजेंडा है ये हम लोगों को 2030 तक जाना है। अगर आपने 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़े होंगे, रिसेंटली एक रिपोर्ट ने ये बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से में हम लोग थोड़े अचीवमेंट से पीछे हैं अगर रीजनल, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, हमारे देश के प्रॉब्लम्स भी अलग हैं, और ये प्रॉब्लम्स को निर्वाह करते हुए हम लोग जो हैं अगर 50% टारगेट तक पहुंचे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट है, अचीवमेंट है। और स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला एंड यूनियन टेरिटरीज लाइक चंडीगढ़, दे हैव been front runners for achievement of sustainable development goals of 2030 agenda, right? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो सोशल SDGs के ऊपर, सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से लिए गए हैं, और जो इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 7 to 12 हैं। एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 13, 14, 15 है। लाइफ बिलो वाटर अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। स्पेशली आप लोग सब जलगांव और भुसावल से हैं, वहाँ पे एक्यूट वाटर शॉर्टेज जो है बहुत बार देखने को मिलती है, खासतौर से रूरल एरियाज में। इन पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप लोगों को मालूम चलता होगा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्लू इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, मैं आयोजकों से निवेदन करूंगा कि ब्लू इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी, ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो आप स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि वो फ्यूचर है। क्लाइमेट एक्शन तो सब लोग हम लोग जानते हैं, बट ये तब अचीव करेंगे जब हम लोग ब्लू इकोनॉमी, hello, yeah, can you hear me? So ये blue economy and sustainable development, yeah, thank you हम लोग तब अचीव कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जो हमारे ओशंस हैं, समुंदर है, और ओशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समुंदर को तो सीज है, ओशन इज ओशंस, पैसिफिक ओशन या हिंद महासागर। समुंदर और महासागर को अगर हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे
तो वो हमारे दुनिया के लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के भी आ सकता है और लाइफ ऑन लैंड को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग अभी के 21वीं शताब्दी के हमारे बच्चे हैं, आप लोग रूबरू हैं क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज से। और बट लाइफ बिलो वाटर यानी ओशन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी से आप लोग अवगत हो क्योंकि वो फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट है, राइट। अब जो है ये प्रोसेसेस जो हैं मैं आपको बताऊंगा जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अप्रोचेस में प्रोसेसेस में है कि जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का असेसमेंट है ये ट्रांसपेरेंट है और पार्टिसिपेटरी, यानी कि हर स्टेक होल्डर को हक है कि उसमें पार्टिसिपेट करें, राइट। हर देश के तरफ से हम लोग जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अप्रोच करते हैं, राइट। स्ट्रक्चर जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से थोड़ा विभिन्न है और ये सर्व सम्मिलित है, मतलब ऑल इंक्लूसिव। और इसका स्कोप जो है, जैसे कि मैंने अपने इनिशियल टॉक में कहा, ये जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर और जमीन के बाहर यानी कि आउटर स्पेस, ये तीनों एस्पेक्ट्स को ये केटर करता है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूनिवर्सल है और ये उन सभी देशों के लिए अप्लाई होता है जहां पे वो चीजें नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है और आप लोगों का ये कहना होगा कि भाई कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है जैसे नेपाल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइफ बिलो वाटर से क्या लेना है ना, मगर लेना देना है क्योंकि नेपाल में अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, नदियों में बाढ़ आता है और उसी प्रकार से जितने भी जो परमानेंट स्नो लाइन है वहां पे अगर आपका स्नो मेल्ट होता है तो समुद्रों का पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है और ये एनवायरनमेंट को सीधे सीधे इफेक्ट करता है। इस प्रकार अगर एनवायरनमेंट नेपाल का हम लोग प्रोटेक्ट करके रहेंगे तो सीधे सीधे हम लोग हमारे समुद्रों को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये अप्रोच इसीलिए सर्वसम्मिलित है, यूनिवर्सल है और ये उन कंट्रीज पे भी अप्लाई होता है जहाँ पे हम लोग सोचते हैं, हमारी सोच जो है ये बताती है कि नहीं यहाँ पे तो समुद्र है नहीं तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। तो अब आते हैं हम हमारे देश के बारे में, क्योंकि जो इनिशियली मेरा टॉक था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उसके इम्प्लीकेशंस, यानी कि हमारे देश पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े राष्ट्र हैं और अब हम सबसे पहले मतलब मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गए हैं और चाइना को हम लोगों ने सरपास किया है, कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे प्रॉब्लम्स अगर हम देखेंगे ये माल न्यूट्रिशन है, जो कि काफी हद तक इंडिया ने पोषण सप्ताह और पोषण माह और पोषण कार्यक्रम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम था, उसको हम लोगों ने अचीव किया है। चाइल्ड मैरिज को हम लोगों ने कम कर दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है ओपन डिफिकेशन जो है वो हम लोगों ने बहुत कम कर लिया है। मैटरनल मोर्टेलिटी जो है हम लोगों का पहले 15% था, अब वो भी काफी कम हो गया है। और चाइल्ड डेथ्स यानी कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है ये भी काफी कम हो गए। ये 8 एस्पेक्ट्स थे जो कि इंडिया को सक्सेसफुल स्टोरी बना सकते हैं as far as sustainable development goals are concerned, right? So there are many interlinkages as I told earlier, and on the basis of this most important thing is जब हम लोग किसी भी sustainable development goal का प्लानिंग करते हैं, पहला हम जो है आज के डेट में लेटेस्ट स्टेटस क्या है, मतलब
who are the most deprived, मतलब सबसे पिछड़े, सबसे deprived का मेरे को हिंदी का शब्द मालूम नहीं है, वो सबसे वंचित वर्ग कौन सा है और वो किस समाज में रहते हैं, और पिछले कुछ दशकों में क्या उनका जो स्टेटस है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो दर्शाता है कि इनइक्वालिटी क्या है और वो इम्प्रूव हो रहा है, कंटिन्यूअस सेम स्टेटस है या कम हो रहा है, ये टाइम ट्रेंड है। और थर्ड जो है, ये डेटा इकट्ठा करने के बाद गवर्नमेंट को प्रायोरिटी एरियाज फॉर एक्शन यानी कि एक्शन प्लान बनाने में मदद होता है। वो कैसे? जैसे कि सोशल नॉर्म्स क्या हैं, उनके बारे में लीगल फ्रेमवर्क क्या है, जैसे कि हमारे देश में जो पिछड़े वर्ग हैं, वंचित वर्ग है, उनके लिए हमारे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें कि फ्रॉम टाइम टू टाइम लीगल फ्रेमवर्क्स को प्रोवाइड किया जाता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये गाइडिंग फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्लानिंग करने में, राइट। और आज के डेट में ये मेरा कल का डेटा है, सबसे ऊपर अगर ओवरऑल इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का स्कोर देखें, इट इज 66, जिसमें सबसे ऊपर के पायदान में केरला है as usual, because Kerala has been a forerunner as far as sustainable development goal is concerned, and Maharashtra is roughly around 7th or 8th in terms of growth and achievement of targets in sustainable development goals, and states like Gujarat, Karnataka have given a very good boost and impetus मतलब सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरीज में है, राइट साइड में आप देखेंगे, वो भी काफी अच्छा अचीव किया। इनफैक्ट चंडीगढ़ का जो स्कोर है, इट इज मोर देन द नेशनल एवरेज। चंडीगढ़ का स्कोर नेशनल एवरेज के ऊपर है। महाराष्ट्र का अबव तेलंगाना, इनफैक्ट अबव हरियाणा, एवरीबडी इज इन। बट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो पहले आप लोगों ने एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आप लोगों ने बीमारू नाम सुना होगा, बीमारू मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये जो 4 स्टेट्स थे, इनको बीमारू राज्य कहते थे। वो इसलिए क्योंकि इनके जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे वो काफी पुअर रहते थे। तो उसमें आज भी अगर बॉटम 5 में देखे जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश यानी कि ये 2 स्टेट्स जो हैं काफी लो है। इनफैक्ट बिहार इज द लोएस्ट as far as achievement of sustainable development goals. However, on certain parameters like maternal mortality और under 5 mortality, बिहार ने काफी अच्छा अचीव किया है। मगर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज मेनी फ्रंट्स में है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और द पॉपुलेशन टू डॉक्टर्स, पॉपुलेशन टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेशियो है, ये बिहार में काफी कम है। ये चैलेंजेस को उभर कर हम लोगों को और आगे बढ़ना है as far as achieving the sustainable development goals is concerned. However, saying so, ये बोलते हुए हम लोगों को satisfied इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी हम लोग जो हैं दुनिया के उन डेवलप्ड देशों के कंपैरिजन में काफी लो हैं, और आने वाले समय में मुझे यकीन है कि हम लोग जो है इन सब प्रॉब्लम से उभर कर हमारे देश को एक सुदृढ़ राष्ट्र और सुदृढ़ देश बनाएंगे, और एसडीजी को का जो ये इंडेक्स है, ये हम लोग फ्रॉम जस्ट एस्पिरेंट टू अचीवर्स हम बनेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन में आपको जो स्टेट्स दिख रहे हैं जो कि फ्रंट रनर्स हैं इन अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी कुछ प्रांत ऐसे हैं जो कि
एस्पिरेंट्स है, यानी कि लो वाले में है, मतलब लोअर परफॉर्मर्स है। फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है, वो काफी पिछड़ा है। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने इंडिकेटर्स हैं उनमें काफी पिछड़ा है। आपके डिस्ट्रिक्ट के बाजू में जो वाशिम डिस्ट्रिक्ट है, वाशिम में भी कुछ तहसील हैं वो काफी पिछड़े हैं। उस्मानाबाद या अभी धाराशिव वो डिस्ट्रिक्ट्स भी पिछड़े हैं। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को ब्रॉडली भी देखा जाता है और माइक्रो लेवल में भी असेस किया जाता है, और ये टारगेट्स को फुलफिल करना जो है पॉलिसी मेकर्स का, एक्शन प्लानर्स का और सभी स्टेक होल्डर्स का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये रहा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स फॉर 2020 and 21 which has been copied yesterday from the नीति आयोग's वेबसाइट। आप लोगों से सबसे ये एडवाइस है कि आप लोग जो है नीति आयोग के वेबसाइट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स को आप अच्छे से देखें, और उसमें आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। और तो कुछ स्टेट्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए, जैसे गुजरात ने बनाया है, बिहार ने बनाया है, और उत्तर प्रदेश ने बनाया है, महाराष्ट्र ने भी बनाया था, हरियाणा ने भी बनाया था। और ये विजन डॉक्यूमेंट जो हैं ये वो दर्शाता है जो कि प्रोग्रेस मेड बाय द स्टेट्स, राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वंस अगेन आप सभी का धन्यवाद देता हूं, और लेट अस नाउ ओपन द सेशन फॉर डिस्कशन। और मैं अपना स्क्रीन यहाँ पे रोक लूंगा। आप सबसे निवेदन है कि कोई अगर आपके पास सवाल हैं या कुछ हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। Anybody has any question? किसी का कोई अगर सवाल है तो हमसे पूछ लें। ओके सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर If anybody has any question, they can ask me. thank you sir. I think no one is asking question. Sir, you have given very nice lecture on sustainable development goals, approaches in understanding national development. Thank you very much, sir. Your thought-provoking address set a perfect platform for our students to become a good human being, because you have told about the blue economy. It is very necessary to think on the blue economy because it's very important for sustainable development. So again, thank you, sir, for your presence in our institute. I pay a lot of thanks from our Kotecha Mahila Mahavidyalaya. Again, thanks, sir. Now, I would like to call Professor Manisha Engre to host the next session. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
श्रीमती प. क. कोटेचा महिला महाविद्यालय भुसावळ येथे आयोजित सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इन इंडिया पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर कंटेम्प्लेशन या ऑनलाईन नॅशनल लेवल वेबिनार मध्ये आपणा सर्वांचे मी प्राध्यापिका मनीषा इंगळे स्वागत करते. आजच्या द्वितीय सत्राच्या रिसोर्स पर्सन माननीय डॉक्टर श्वेता खंडलवाल आपल्यात ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. मॅडमांचे मी शब्द सुमनाने स्वागत करते. द ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन हर एक्सलेन्सी Mrs. Dr. Shweta Khandelwal. Ma'am, you hardly need any introduction. You have made all of us proud of your achievement and numerous companies. But I'm going to a brief introduction about ma'am. डॉक्टर श्वेता खंडोलाल मॅडमांचे शिक्षण MSc जिओग्राफी UGC नेट JRF MPhil PhD झालेले आहे. मॅडमांचे एकूण टीचिंग एक्सपिरियन्स 19 वर्षाचा आहे. मॅडमांनी वेगवेगळ्या जर्नल्स मधून 15 रिसर्च पेपर पब्लिश केले आहेत. यंग जिओग्राफर म्हणून मॅडमांना 2010 मध्ये नॅशनल अवॉर्ड मिळाला आहे. मॅडमांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जिओग्राफर पुणे तसेच राजस्थान जिओग्राफिकल असोसिएशन भिलवाडा असे अनेक ऑर्गनायझेशनचे मेंबरशिप घेतले. मॅडमांचा बुकही पब्लिश झाला आहे. तर मी माननीय श्वेता खंडोलाल मॅडमांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. वेलकम मॅडम. मॅडम ओके. Hello, sir. Am I audible? Yes, madam, audible. Yes, sir. Thank you so much, sir. You can share your screen also. Yes, sir. Okay, sir. I think my screen is visible. Yes, madam, visible. Okay, okay, sir. Okay. Yeah. Thank you, Dr. K.C. Suryavanshi, sir, for giving me this opportunity. So here the conference, the webinar on sustainable development in India, past, present, and future contemplation. So, and organized by Srimati P.K. Kotecha Mahila Mahavidyalaya, Bhusawal. So here today I'm presenting as the
theme of the conference is the sustainable development. So I'm presenting my small presentation on green energy towards a sustainable living. So since time memorial, Indians have been very conscious of environment. Long before ecology became the refrain of the global song at Stockholm and Rio de Janeiro, the ancient India, our Vedic civilization, had already a sacred space for the environmental ethos. The Vedic tradition has always promoted the principle of ecology harmony centuries ago, not because the world was perceived as heading for an environmental disaster, nor because of any immediate utilitarian exigency, but through its quest for knowledge and physical symbiosis, synthesized in a system of ethical awareness and moral responsibilities. There is a Shanti mantra, Sarve bhavantu sukhina, Sarve santu niramaya, Sarve bhadrani pashyantu, Ma kashat dukha bhag bhaget, which express their beliefs about the importance of interrelationship among all the natural laws, people, and regions. So with these words, now I come on today's topic, the sustainable development. So according to the Sustainable Development Commission, the sustainable development is that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. They presented their 5 principles under securing the future, which named as the living within the environmental limits, ensuring a strong, healthy, and just society, achieving a sustainable economy using sound science responsibility, and promoting good governance. So I come on the history of the sustainable development. As we all know what is the history of the development, but still I just want to tell you the major history of sustainable development. So basically the sustainable development concept formed the basis of the United Nations Conference on Environment and Development held in the Rio de Janeiro in 1992. The summit marked the first international attempt to draw up action plans and strategies for moving towards a more sustainable pattern of development. And it was attended by more than 100 head of these states, the representative from more than 178 national governments, and many other representatives from the range of the other organizations representing the civil society. So the sustainable development was the solution to the problems of environmental degradation discussed in the Brundtland Commission, which was held in 1987 on the report Our Common Future. So the remit of the Brundtland Commission was to investigate the numerous concerns that had been raised in previous decades, namely that human activity was having severe and negative impacts on the planet, and that pattern of growth and development would be unsustainable if they continue unchecked. So some other theories or some other we can see like this. I have written in this, which Rachel Carson's Silent Spring, which was given in 1962, Tragedy of the Commons in 1968 by Garrett Hardin, The Blueprint of the Survival of by the Ecologist magazine in 1972, and the report, the Limits to Growth report, which was presented in 1972 by the Club of Rome. So the concept of sustainable development received its first major international recognition in 1972
at the UN Conference on the Human Environment held in the Stockholm. The term was not referred to explicitly, but nevertheless, the international community agreed to the notion, now fundamental to sustainable development. The both development and the environment addresses as a separate issue could be managed in a mutually beneficial way. Yeah, so the term was popularized 15 years later in our Common Future report of the World Commission on the Environment and Development. It was not until the Rio summit, however, that major world leaders recognized sustainable development as a major challenge. It remains today. So more recently, the World Summit on Sustainable Development, which was held in Johannesburg in 2002, attended by the 191 national governments, UN agencies, multilateral financial institutions, and other major groups to assess the progress since Rio de Janeiro summit. So the Johannesburg summit delivered 3 outcomes, basically a political declaration, the Johannesburg plan of implementation, and a range of partnership initiatives. The key commitment includes those on sustainable consumption and production, water and sanitation, and energy. So here the sustainable development goals. Our sustainable development goals emphasizes the interconnected environmental, societal, social, and economic aspects of sustainable development by putting sustainability at the center. The Sustainable Development Goals were formulated in 2015 by the United Nations General Assembly as a part of the post-2015 development agenda, which sought to create a future global development framework to succeed the Millennium Development Goals, which extend that year. And they were formulated, they were formally articulated and adopted the United Nations General Assembly resolution, which is called as 2030 Agenda. So on July 6th, 2017, the Sustainable Development Goals were made more actionable by the United Nations General Assembly resolution that identifies specific targets for each goal and provides indicators to measure progress. And more targets are to be achieved by 2030, although some have no end date. So basically the Sustainable Development Goal, or we can say the global goals, are the collection of 17 interlinked objectives designed to serve as a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. So the Sustainable Development Goals have been adopted, as I already said, in by United Nations General Assembly in 2009. Unlike the Millennium Development Goals, which only targets the developing countries, the Sustainable Development Goals applies to all countries, whether rich, middle, or poor countries. The Sustainable Development Goals are nationally owned and country-led, wherein each country is given the freedom to establish a national framework in achieving the Sustainable Development Goals. So these are the 17 Sustainable Development Goals. The first one is no poverty, second, zero hunger, third, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, required inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action,
life below water, life on land, peace, justice, and strong institution. And the last one is partnership for the goals. These are the 17 sustainable development goals. Now I am talking on the development goals. Yeah, the slide is the education for the sustainable development goals. So what do you mean by the stable? What does mean by the education for sustainable development goals? It is a term used by the United Nations, and it is defined as the education that encourages changes in knowledge, skills, values, and attitudes to enable a change in knowledge, skills, enable more sustainable and just society for all. So education for sustainable development aims to empower and equip current and future generation to meet their needs using a balanced and integrated approaches to the economic, social, and environmental dimensions of the sustainable development. So in this Agenda 21 was the first international document which was identified as an essential tool for achieving sustainable development in terms of education, and which highlight the areas of action for education. It is also a component of measurement and an indicator for Sustainable Development Goal 12 for the responsible consumption and production. So Sustainable Development Goals 12 has 11 targets, and by 2030, it ensures that the people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with the nature. After the 20 years of Agenda 21, the document was declared the future we want, which is declared in the Rio plus 20 UN National Conference on Sustainable Development, stating that we resolve to promote education for sustainable development and integrate sustainable development more actively into education beyond the decade of the development, more actively into education beyond the decade of the education for sustainable development. One of the other version are for the UNESCO, if we talk about the UNESCO, the education for sustainable development, it involves the integrating key sustainable development issues into teaching and learning. This may include instruction about the climate change, disaster risk reduction, biodiversity, poverty reduction, and sustainable consumption. It also requires participatory teaching and learning methods that motivates and empowers learners to change their behavior and take action for sustainable development. So basically, education for sustainable development promotes competencies like critical thinking, imagining future scenarios, and making decision in collaborative way. The Thessaloniki Declaration, which presented at the International Conference on Environment and Society, Education and Public Awareness for Sustainability by UNESCO and the Government of Greece in December 1997, which highlights the importance of the sustainability not only with regard to the natural environment, but also with the poverty, health, food security, democracy, human rights, and peace. So here now I am talking about the Sustainable Development Goal number 7, which says affordable and clean energy. And it also it says that ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. So in 2019, the United Nations General Assembly adopted 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals, which includes a dedicated and a standalone goal on energy
SDG 7, calling to ensure the access to affordable, reliable, and sustainable modern energy for all. Energy that lies at the heart of both 2030 agenda for sustainable development and the Paris Agreement on climate change. It ensure the access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all, with open a new world of opportunities and jobs, empowered women, children, and youth for better education and health, more sustainable, equitable, and inclusive communities, and greater protection from and resilience to climate change. Yeah, the global roadmap for accelerated SDG 7 action, which resulting from the higher level dialogue on energy 2021, provides a guide for collective action on energy across sectors that transcend individual and piecemeal approaches and deliver scaled up individual and broad impact. It calls for the action in 5 key areas, basically closing the energy excess gap, rapidly transitioning to decarbonized energy system, mobilizing adequate and predictable finance, leaving no one behind on the path to a net zero future. And the last one is harnessing innovation, technology, and data. Basically, the roadmap includes 2 sets of milestones for 2025 and 2030. So here are the some of the achievements of Sustainable Development Goals 7. So between 2000 and 2018, the number of people with electricity increased from 78 to 90%, and the number without electricity dipped to 789 million. Yet the population continues to grow. So will the demand for cheap energy, and an economy reliant on fossil fuel is creating drastic change in our climate. Investing in solar, wind, thermal power, improving energy productivity, ensuring energy for all is vital if we are to achieve Sustainable Development Goals 7 by 2030. Expanding infrastructure and upgrading technology to provide clean and more efficient energy in all the countries will also encourage growth and help for the environment. So progress towards Sustainable Development Goals, if we see that since 2015, the world is clearly not on the track for achievement of the Sustainable Development Goal 7. Globally, 733 million people were still lacking access to electricity, and 2.4 billion people did not have access to clean cooking fuels and technology in 2020. So in terms of renewable energy, globally, there were already close to 3 terawatts of renewable energy capacity in 2020, which representing nearly 29% of all power generation, and renewable accounted for 82% of the newly installed capacity that year. So however, fossil fuels still made up about 60% of global power generation capacity. And in addition, the current average annual rate of energy efficiency improvement must increase the current from 0.08% to 3%. So the Secretary General of Sustainable Development Goals report provides an overview of overall progress of the Sustainable Development Goals, while tracking SDG 7. The Energy Progress Report assesses the
progresses made and provides a snapshot of how far we are from the achieving the sustainable development goal. So it is basically the annual SDG 7 policy briefs provides a focus on energy interlinkages with the other sustainable development goals. So here are the boost for the green energy, why the green energy is very much important. So the Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, has received a budgetary allocation of 10,222 crore rupees, a 45% hike from the 7,033 crore it expects to spend in the current financial year. And the most significant hikes in the ministry programs in India are for off-grid solar projects, on which government is expected to spend about 61 crore in the current fiscal, but has budgeted 360 crore for the coming financial years. So India has had a target of installing 100 gigawatt of solar power projects by the year 2022, but has only installed 63 gigawatt. So off-grid solar power solar projects constitute less than 5% of the target. The allocation for solar power expected to be supplied to the grid has been raised to 4,970 crore rupees, up from the 3,469 supplied to the crore expected to be spent by the March 2023. The National Green Hydrogen Mission is a 19,000 crore rupees program which use, supply hydrogen for renewable energy resources, which has been allotted to 97 crore rupees. So underlining the green energy was among the Saptarishi, or the 7 guiding lights to Miss Sitaraman, Union Finance Minister, mentioned that would steer Indian through Amrit Kal, or next 25 years. She also said that the ministry Ministry of Petroleum and Natural Gas has earmarked 35,000 crore rupees for the priority capital investment, and the Union Budget 2023-24 has provided a budgetary allocation of rupees 7,327 crore for the solar power sector, which includes grid, off-grid, and PM Kusum project. And this is the 48% increase over the previous 4,979 crore rupees in the revised estimates. So here are the 3 key measures for the budget allocation of rupees 35,000 crore to start catalyzing near 30 billion in energy transition finance required annually by India for its net zero future. And there are 3 types of measure which will be needed. Risk guarantees to reduce the cost of capital for low carbon investment and in the country. Second one is the demand aggregation measures, as has been done for LED lighting and the electric buses. And the third one is viability gap financing for hydrogen electrolyzers and offshore wind announced for battery storage. The second one, as mentioned by Ms. Sitaraman, that a green credit program to be notified under the Environmental Production Act, which will incentivize environmentally sustainable and responsible action by companies, individual, local bodies, and help to mobilize additional resources for such activities. She also emphasizes on building on India's success in afforestation
The mangrove initiative for shoreline habitat and tangible incomes, which is also known as MISHTI, will be taken up for the mangrove plantation along the coastline and on the salt pan lands. The last one is according to the environmental officials of environmental ministry, it involves several existing schemes that incentive emission reduction by industries or other going of plantation in barren land, which become the store of carbon over the time. So this graph shows the top 10 countries in the consumption of solar. So here we can see that China leads by 308.5 gigawatt, and India is in the fourth position. If we are looking into this table, this is the table of the states of the state of India, which represents the installed capacity of the solar power plant from 2016 to June 2022, which shows that the leading state is Rajasthan, followed by Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, and MP. So this is the annual solar power generation plans. As we can see that as the year increases and the annual solar power generation has also been increasing. So there is a very bright future for the India in investing the green energy. So it is the installed solar PV on 31st March of every year, which was recorded. So it recorded that in 2021, around 40,000 megawatt cumulative capacity of solar PV has been installed. So here comes to PM Kusum Yojana, which is also known as Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan. So the Ministry of New and Renewable Energy has launched the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan, which is also known as PM Kusum scheme, in the year 2019 for the farmers to install solar pumps and grid connected solar and other renewable power plants. The scheme envisages income generation for farmers from their infertile land with the establishment of solar power plants. While the farmers can sell the power generated from the solar plants to the power distribution companies or DISCOMs, the solar pumps can also be installed for irrigation of agricultural land. This scheme aimed at ensuring energy securities for farmers in India, along with honoring India's commitment to increase the share of installed capacity of electric power from non-fossil fuel source to 40,000 by the year 2030 as a part of intended nationally determined contributions. So PM Kusum Yojana has 3 components, namely component 1, component A, component B, and component C. So in component A, for setting up 10,000 megawatt of decentralized grid connection renewable energy power plants on barren land. Under this component, renewable energy based power plants of capacity 500 kilowatts to 2 megawatt will be set up by individual or group farmers or cooperatives, panchayats, farm producer organizations on barren or fallow land. The power plants can also be installed on cultivable lands on silt where crops can also be grown below the solar panels.
The renewable energy power projects will be installed within 5 kilometers of the radius to the substation to avoid a high cost of sub-transmission lines to reduce the transmission losses. The power generated will be purchased by the local DISCOM at pre-fixed tariffs. So the component B says that the individual farmer will be supported to install stand-alone solar agricultural pumps of the capacity up to 7.5 horsepower for the replacement of existing diesel agricultural pumps or irrigation system in off-grid area where grid supply is not available. And the component C, under this component C, the individual farmers having grid connected agricultural pumps will be supported to solarize pumps, and the farmer will be able to use the generated solar power to meet the irrigation needs, and excess the solar power will be sold to DISCOM at pre-fixed tariff. So this is the map of India, which shows that these are some of the pilot areas: Gujarat, Maharashtra, and these are the other states where the PM Kusum Yojana is being adopted, and it has a 3 component, as I said earlier: component A, component B, and component C. So the component A is basically more on the renewable energy on the agricultural lands. Component B is for the solar pumps, replacing the diesel pumps, and the component C is the irrigational pumps of grid connected irrigational pumps. This is the feature of Kusum scheme, which shows that if we are installing 27.5 lakh of solar water pumps, which bifurcated into 17.5 lakh pumps will be installed off grid, and 10 lakh where install the grid where grid is available. So around the farmers can also sell the solar power generated to the off grid to DISCOM. So now I am talking to the Rajasthan share. The Rajasthan is a state which basically, if we see that Rajasthan is a So Rajasthan state has an ideal location for generating solar energy due to its massive amount of unused land and constant supply. The uninterrupted sunlight leads to better energy generation. And this is also one of the reasons why Rajasthan is India's second largest producer on solar energy. The opportunity for solar energy related projects and businesses are immense in the state. The Rajasthan Investment Promotion Scheme, RIPS 2019, and other measures contributed to the creation of investment-friendly environment. Under the RIPS 2019, the state government has designed renewable energy as a priority sector. So the Rajasthan state, Rajasthan was the first state to have completed the selection of the farmers for installation of the solar plants on their land in the year 2021, with the capacity exceeding center's target. The Rajasthan Renewable Energy Corporation had allotted 722 megawatt plants to 23 farmers under the Kusum scheme, which is launched in 2019. The farmers who do not have money to invest can lease out their land to private developers and receive an annual income. The availability of power near the substations will also help reducing transmission losses as well as the expenses for expansion of the infrastructure DISCOMs. So it also helps in using underutilized land. So as the Rajasthan state has many open spaces that can be used to generate solar energy. Due to the desert and its intense heat, some of the land has become barren, and the area cannot use for
farming, but it can be used to generate the solar power energy. So also the state has sparsely inhabited in comparison to the rest of the country. Solar power producing systems and the plants in less inhabited areas allow clean energy to reach the isolated communities that do not have access to electricity. So these are some of the major investment proposals presently under the consideration. The Reliance New Energy Solar Limited, in which the sustainable subsidiary of which invest around 1 lakh crore rupees for the generation of 20,000 megawatt solar plant. Greenco Group investment 30,000 crore rupees in wind and solar hybrid power project with a capacity of 4,500 megawatt. About the state government has also allotted government land measuring around 2,400 hectares in Banda village of Jaisalmer district to Adani Renewable Energy Holding 4 Limited Group to set up 1 gigawatt power solar power project. And Jindal Southwest proposed 48,500 crore solar power projects with a capacity of 10,000 megawatt, where Renew Power proposed 10,000 megawatt solar projects with the expenditure of rupees 30,000 crore. The National Thermal Power Corporation has also become major companies and in this renewable energy sector. Invest Rajasthan Summit, which was held in October 2022, the state, the two major companies, the Tata player and the Adani Group, announced their plan to invest in megawatt scale projects in Rajasthan. And further, many other sectors like Coal India Limited to fossil fuel based PSUs, Nacho and ONGC is also planning to develop large scale solar projects in the state. So the renewable energy capacity and the future targets. If I'm talking about the Rajasthan, so Rajasthan has a total of 19,116.80 megawatt renewable energy capacity installed. Solar power takes the lead of the around 74% of solar power, 75% of solar power, 24% of wind energy, and 1% of biomass based plant. So under this solar energy policy 2019, the state is targeting to generate 30 gigawatt of solar power by 2024-25. So according to the data released by the Union Ministry of Renewable Energy, Rajasthan has left behind Karnataka and Gujarat by developing more than 10 gigawatt of solar power capacity as of 31st January 2022. So as per record, now the share of the Rajasthan alone in the total development of solar power capacity in the country has exceeded to 20%. The state government launched the Solar Energy Policy 2019, which make Rajasthan a leading state in the field of clean energy. So this is the renewable energy capacity, which I have told previously in the first point. Around 19,160.80 megawatt, which includes 75% of solar power, 24% of wind power, and 1% of the biomass-based plant. So besides the solar energy power generation through wind energy, around 4,500 megawatt biomass, around 125 megawatt, and through small hydro energy 24 megawatt also generated.
It is the world biggest the solar park has been inaugurated in Jodhpur, which with the capacity of around 22 megawatt, and two solar parks of 925 megawatt and 750 megawatt in Jaisalmer district. So Rajasthan has the top position in the country of PM Kusum Yojana. PM Kusum Yojana, which aimed at the energy security for farmers, along with the honoring India's commitment to increase the share of the installed capacity of electric power from non-fossil fuel sources to 40% by 2030 as a part of intended national determined contributors. The first solar plant in the country under the scheme was set up on 3.5 acre of Jaipur district at the cost of rupees 3.7 crore. Until now, 45 solar plants have been installed under the scheme first of Kusum Yojana in the state, which are from them around 60.5 megawatt energy has been generating. So in the year 2030, 23-24, the Rajasthan budget targeting the installation of around 11,000 megawatt new renewable energy capacity in the coming years. Considering the industry demand, the budget proposes a reduction of electricity duty on solar energy from 60 paisa to 40 paisa per unit. The solar projects will get us 100% exemption from land tax for 7 years. The cap on the captive solar power projects has also been removed. The new budget allows 100% of banking of energy and no restrictions on withdrawals during peak hours for captive solar plants. Around 100% of banking, billing, and transmission charges have been waived off. Industries are now permitted to install captive solar plants with a capacity higher than the contractual demand. The Bhadla-Bikaner power bulk power corridor has been proposed to evacuate renewable energy demand. The state government will set up 15 new substations for 15 kilowatt and 6 substations for 220 kilowatt. These additional substations will aid in converting the received DC power into the high voltage AC power before injecting it into the transmission lines. In another a bold move, the government will set up an advanced analytics based integrated data and command center to help with the demand of forecasting and scheduling. So Rajasthan is the India's top solar power state with a capacity of 16 gigawatt. In the last decades, the state government has been consistently promoting rooftop and utility scale solar installation in the region and to harness the widely available solar energy resources. At the start of the year, the Indian president laid the foundation for a mega 1 gigawatt project in the western state. So the first farm-based solar plant under PM Kusum Yojana has come up in the Jaipur district's Kotputli Tehsil with the provision for the production of 17 lakh unit of electricity every year. Another 1 megawatt project has been established on 3.5 acre of farmland in Kotputli's Bhaloji's village. The new plant is also the first of 623 farm-based solar plant projects selected by the Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited for generating 722 megawatt capacity in the state under the scheme of its
for state. The state has also adopted the solar energy and the wind and the hybrid energy, the both solar and wind energy policies in December 2019 with the plan to develop a capacity of 38,000 megawatt renewable energy. The capacity to be developed under the Kusum scheme will be of the order of 2,600 megawatt, for which the letters of award has been issued to 623 applicants. So now I'm talking about the PM Kusum scheme in the Maharashtra. So under the PM Kusum scheme in Maharashtra, it is targeted to achieve 10,000 megawatt capacity through installation of grid connected solar power plants, each of capacity up to 2 megawatt under the component A, and solarization of 35 agricultural pumps under component B and component C. So according to the state's unconventional energy generation policy, which the government unveiled in January 2021, Maharashtra intends to continue to its leadership track and generate about 40% of its electricity from the renewable sources by the year 2030. As of June 30th, 2022, the renewable energy contributes 24.36% to Maharashtra power mix. So the government of Maharashtra has also targeted to deployment of the 1 lakh numbers of off-grid solar power agriculture pumps in the phase-wise manner under Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana MSKPY within 3 years from the dated 2019 January, under which first phase around 25,000, second phase 50,000, and third phase 25,000 numbers of off-grid solar power agriculture pumps has been installed. The Maharashtra Energy Development Agency (MEDA), under the aegis of Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, assistant to state and central government to promote and develop new renewable sources of energy and technologies, and to promote and implement energy for energy conservation, and which is committed to explore many other resources like wind, biogases, cogen, hydro, biomasses, geothermal, wave, which are the clean and green energy. So there are some of the goal targets which can be achieved till 2030. It is to ensure the universal access to affordable and reliable modern energy services, to increase the sustainability substantially the share of renewable energy, double the global rate of improvement in energy efficiency, enhance the international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, and including renewable energy, energy efficiency, and advanced and cleaner fossil fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology. It also has a goal by 2030 to expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particularly least developed countries, small island developing state, and landlocked developing countries. So now come to the future of the green energy. As India is gradually increasing the use of solar energy and wind energy, the Central Electricity Authority stated that the renewable energy generation might increase from 18% to 44% by the year 2029-30 in the country. So in the future, India aims to portray a green environment with rooftop solar system in all Indian households. So India underlined that its nationally determined contribution to fight the climate change
will help to achieve the long-term goals of reaching net zero emission by 2070. So the government of Rajasthan intend to tap state's huge solar power generation potential of 142 gigawatt to make Rajasthan a green energy state and to contribute India's commitment in UN climate change conference and which held in Glasgow COP26 to achieve goal of net zero emission by curtailing dependency on conventional sources to energy like coal, oil, gas, etc., and to provide a sustainable, reliable, affordable electricity to all its consumers. In order to promote a decentralized solar power plants being developed under PM Kusum components C, which tells the feeder level solarization at the load center having predominantly agricultural load in rural areas. The state government has also formulated Saur Krishi Ajivika Yojana or SCALE under PM Kusum component C feeder level solarization. So the core objective of renewable energy deployment in India is to promote the economic growth, enhance energy security, increase energy access, and reduce climate change. Sustainable development is possible by the use of clean energy and by ensuring access to affordable and reliable energy for every citizen. India has also emerged to become one of the world's most attractive renewable energy market due to a strong government backing and an improving economic positions. To achieve sustainable growth and avert catastrophic climate change, the government will make rapid shift to renewable energy technology. So the customers are becoming more aware of saving energy by the use of solar, wind, biomass, waste, hydropower energies, and it is evident that clean energy is affordable. India has set a target of installing around 175 gigawatt of renewable energy by the year 2022. The target is distributed into 100 gigawatt from solar, 60 gigawatt from the wind, and 10 gigawatt from biopower, and 5 gigawatt from the small hydropower. Investors have also planned to create a total capacity of more than 270 gigawatt, around 191 gigawatt by private corporations, 58 gigawatt by foreign companies, 18 gigawatt by private sector contributors, and Indian Railways contribute around 5 gigawatt. As per the recent predictions, the solar and wind potentials will be more than 750 gigawatt and 410 gigawatt by the year of 2047. So India's renewable sector is blooming, with the country projected to add around 30 to 40 gigawatts of renewable energy annually until 2030, enough to power up the 30 million more homes each year. The Institute of Energy Economics and Financial Analysis estimated that India, the third largest energy consuming country in the world, will reach 405 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. It also expected to surpass the government's target by producing 50% of electricity from the non-fossil fuel sources by the end of the decade. So in the last, there is I just want to say that there is a
Ishopanishad says that Isha Vasyam Midam Sarvam Yat Kincham Jagatyam Jagat Ten Tyakten Bhujitham Magrit Kassis with Dhanam, which teaches us about the sustainable development. Environmental degradation is drawing everybody's attention nowadays. In the race for the growth, our environment has been subjected to constant damage. To sustain economic growth and development policies, economic growth and development policies, regulations, and incentives need to be established along with the Vedic principles of ecological harmony, which is a need of the hour. So, thank you. Is there any question anybody wants to like to have? कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील मॅडमांना तर त्यांनी प्रश्न विचारावे. Okay. Thank you so much, ma'am. That was indeed motivating and extremely informative. We are so honored and privileged to have you among us. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मी सूर्यवंशी सरांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे. I would like to thank our distinguished resource person, Professor Dr. Shweta Khandelwal madam, for making an excellent presentation and making this seminar a very meaningful and interesting, as well as given very useful information about sustainable development, the green energy towards sustainable living in a lucid language. Thank you, madam, for your presence. Thank you, Suryavanshi sir. Thank you, madam. Thank you. Delegates, wait for 5 minutes. Our next session will start within 5 minutes. Meeting leave करू नका. Our next session for validatory functions, it will start within 5 minutes. So stay in a meeting.
हॅलो 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 बोला. सर, मला माझा आवाज येतोय का? एम आय ऑडिबल? हॅलो, सर येतोय आवाज. आवाज येतोय? येस ओके सर. ओके ओके, थँक्यू थँक्यू. ओके सर. वन डे नॅशनल लेवल वेबिनारच्या समारोपाच्या सत्राला आता आपण सुरुवात करणार आहोत. आजच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित चीफ गेस्ट पीओ नाटा महाविद्यालयातील इंग्रजी विभागाचे प्राध्यापक माननीय डॉक्टर सुभाष झनके सरांना मी विनंती करते की आम्हाला त्यांनी मार्गदर्शन करावे. ओके, थँक्यू मॅडम. मे आय शेअर माय स्क्रीन? वुड यू प्लीज अलाउ मी टू शेअर माय स्क्रीन? येस सर, येस सर. हॅलो. ओके, so share. All right. We want to continue this topic. Fine. I'll not take your much time. मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही, पण because I was asked by the organizers. Okay, anyway, at the outset, I am very much thankful to the organizers, the principal and vice principals of the college, and the coordinator or the convener as well. Good afternoon, everyone. I hope you have discussed so many things in this regard, that is sustainable development and future of this Indian scenario. Actually, I had selected a small topic, just I'll put you within 5 to 10 minutes before, that is sustainable development and future of education in Indian context, because education is the very important aspect in regard to sustainable development, because unless and until we don't have a very sound ground and footing of education in any country, for example, there is no possibility of this type of sustainable development. Okay, I'll not go through the introductory part, as I hope you have already discussed, but still I'll just pick 2-3 things about that. You have already discussed sustainable development goals. There are 17 goals, and this is what we have a blueprint. Sustainable development goals are the blueprint. It means a kind of planning to achieve a better and more sustainable future for all in the country, and this is global. All right, so coming to our country, let's see. I'll quote here, I'd like to quote here Gyan Pathak, a very renowned journalist, and he says in his article, India failing to meet sustainable development goals, and that is published in the reputed journal, that is the Meghalaya. And he says the SDG data shows India's claims are misleading. It means we are not marching on the right track towards sustainable development even today. India actually lost 8 precious years. It means 8 years back that the move has been already started for sustainable development. Okay, and he further says that की next 8 years मध्ये काय असणार आहे, that is really a question. And continuing the same idea, he says that India has fallen down this year from its 117 position to 121 position. This is what the present scenario of about sustainable development of India.
Okay. Now these are the reports. You can find the UN report available on the website also. I'll not go into detail in the same. See, these are, as I hope you have already discussed, all these 17 SDGs, okay, beginning with no poverty and ending with partnership for goals. All right, this is the global partnership. I'll talk very briefly about this fourth goal, that is free education, free quality education. This is the fourth sustainable development goal. Suryanshi sir, I hope I am audible to everyone. सगळ्यांना माझा आवाज व्यवस्थित येतो? येतोय सर, येतोय. ओके ओके. म्हणजे विद्यार्थी म्हणजे जो आहे, तुम्ही इंग्रजीत बोलतोय, मध्ये मध्ये मी प्रयत्न करेल मराठीत बोलण्याचा, पण समज म्हणजे मुलांना काय अडचण नाही ना, विद्यार्थ्यांना आणि पार्टिसिपंट. ओके, कमिंग टू द पर्टिक्युलर टॉपिक, that is the fourth goal, free quality education. Now we all know that education is the heart of everything, and naturally this agenda of sustainable development 2030 agenda also has its heart, that is education. And here we will find what is this fourth goal in nutshell, what it want to provide for. And this want to provide ensuring inclusive, equitable, quality education. See, these two words are very important, three words. Inclusive means none should be left. Equitable, that is government should invest, government should make a special provision for. And quality education, quality education matlab teachers should be recruited, and not merely teachers, the trained expert teachers, they should be given a reasonable amount of salary, and all other things are there. So many things are covered here within these three terms as well. Second, ensuring lifelong learning opportunities. This is sustainable means a kind of a specific term of time is covered thereover. So here lifelong learning opportunity, not for only 10 years, that is up to 20, 30, etc. Lifelong, from early childhood to the adult education. Ensuring equity, inclusive, and gender equality means no biases must be there, irrespective of region, gender, caste, creed, means irrespective of everything. कुठल्याही आधारावर कुठलेही डिस्क्रिमिनेशन नसतानाच केलेले हे सगळे प्रयोग अपेक्षित आहे. Then ensuring effective learning and acquisition of relevant knowledge. फक्त नॉलेज देणे नाही, फक्त शिकवणे नाही, इफेक्टिव्ह अँड नॉट ओनली टीचिंग, ऍक्विजिशन. ऍक्विजिशन फार महत्वाचा शब्द आहे, की केवळ शिकून नाही चालणार आहे, तर ते विद्यार्थ्यांनी घेतलं, संपादन पण. ऍक्विजिशन म्हणजे संपादन. ओके, स्किल्स, केवळ नॉलेज नाहीये, स्किल्स अँड कॉम्पिटन्सीज. कॉम्पिटन्सीज सुद्धा इथे अपेक्षित आहे. म्हणजे त्याला त्याच्याकडे स्किल उपलब्ध झालं किंवा स्किल डेव्हलप झालं तेवढ्यावर नाही चालणार आहे, तर तो कॉम्पिटंट झाला पाहिजे. म्हणजे increase the number of people having knowledge, skill and competencies through education, हे टार्गेट आहे. नंतर ensuring the relevance of learning in terms of vocational, you see, overall type of education, त्याच्यात व्होकेशनल पण हवंय. व्होकेशनल, टेक्निकल स्किल त्याच्यात येईल अशा पद्धतीचं, अँड रिसर्च ऑल्सो. ओके, सो दॅट इट मे क्रिएट ए काइंड ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप at the place of every citizen or in every country as well, that to get interconnected with the whole world as well.
and naturally there will be the decent work by. Yeah, there are three underlying principles in this regard. Education, fundamental human rights, and it should be looked at likewise only. शिक्षणाकडे केवळ आणि केवळ याच पर्स्पेक्टिव्हने पाहिला पाहिजे. सेकंड, एज्युकेशन इज पब्लिक. पब्लिक त्याला प्रायव्हेट करून चालणार नाही. आणि because it is shared by society, teachers, educators, students, private sector, communities, okay, families, youth, children, so many facets are there, आणि म्हणून ते पब्लिक आहे. जेंडर इक्वॅलिटी त्याच्यात आवश्यक आहे. अनलेस अँड अंटिल आपण म्हणतो जिच्या हाती पाळण्याची दोरी आणि तिलाच वंचित ठेवलं किंवा तिच्यासाठीच मुलगा इंग्लिश मीडियमला, मुलगी मराठी मीडियमला. सो these are biases, and these biases are not entertained in this program. Now coming to the 7 outcome targets of this goal, education, and the first target is universal free primary and secondary education. It's completely free, and this is outcome based. You see, outcome is very important. केवळ एज्युकेशन देऊन नाही चालणार आहे, तर त्याचा आउटकम काय आहे? आउटकम शुड बी मेजर्ड अँड जनरेटेड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंड थिंग इज इक्वल ऍक्सेस टू क्वालिटी प्री प्रायमरी. म्हणजे जास्तीत जास्त आता भर देण्याची गरज आहे ती म्हणजे प्रायमरी, प्री प्रायमरी, सेकंडरी. यू सी, हायर एज्युकेशन कडे बऱ्यापैकी लक्ष तुलनेने दिलं जातं, पण द न्यू कॉन्सेप्ट इज की खरी जडणघडण जी होते माणसाची ती सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये सेकंडरी पर्यंत होते, आणि म्हणून त्याच्याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. अँड हिअर वेल ट्रेन्ड एज्युकेटर्स, टीचर्स त्याच्यासाठी असणं आवश्यक आहे. मी तर बऱ्याचदा आमच्या मित्रांना गमतीने म्हणतो की सगळ्यात जास्त पगार त्या प्री प्रायमरी स्कूल्स आणि प्रायमरी स्कूल्स, सेकंडरी स्कूलच्या लोकांना असला पाहिजे. याचा अर्थ हायर एज्युकेशन मध्ये कमी असावा असा अर्थ होत नाही, तर जेवढं हायर एज्युकेशनला त्याच्यापेक्षाही जास्त तिकडे द्यायला पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की जे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आहे त्याची सुरुवात खरं तिथून आहे, आणि त्याच्यामुळं ह्या प्रोग्राम मध्ये त्याच्याकडे जास्त लक्ष देण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली आहे. दॅट हॅज बीन मेजर्ड. इक्वल ऍक्सेस, आणि तो विशेष म्हणजे क्वालिटी एज्युकेशन इज एक्सपेक्टेड. द थर्ड आउटकम टार्गेट इज इक्वल सक्सेस टू अफोर्डेबल. यू सी, अफोर्डेबल, अगदी गगनाला भिडलेल्या फीज असं नाही. अफोर्डेबल टेक्निकल, म्हणजे बेसिक एज्युकेशन शुड बी फ्री ॲट ऑल, बट टेक्निकल, व्होकेशनल अँड हायर एज्युकेशन शुड बी ऑल्सो अफोर्डेबल. एवढंच नाही तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये तर ते सुद्धा फ्री करण्याचं म्हटलेलं आहे. बट ओके, इफ नॉट पॉसिबल इट शुड बी ॲटलिस्ट अफोर्डेबल. मेडिकल एज्युकेशन असेल, ओके, इंजिनिअरिंग एज्युकेशन, और जे तत्सम म्हणूया आपण रेलेव्हंट अदर टाइप ऑफ हायर एज्युकेशन असेल, तर इट शुड बी स्किल. It is for skill development, and skill development should be the target, and it should be also outcome based, because everything has been now outcome based, and unless and until it is outcome based, no use as such. Coming to the next target is increase the number of people with relevant skills for financial success. You see, this is very important. की increase number of people, म्हणजे केवळ 1%, 2%, 3%, 10%, 20% एवढेच लोक स्किल झालेले आहेत, पैसे कमवत आहेत, बिझनेस करतायत, हे करतात, एवढ्यावर चालणार नाहीये. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट एक्सपेक्ट्स इन्क्रीज. हे पर्सेंटेज खूप वाढलं पाहिजे, 100% पर्यंत जायला हरकत नाही, पण वाढलं पाहिजे. हे खूप कमी आहे, आणि ते प्रमाण केवळ शिक्षितांचं वाढून चालणार नाही, तर त्यांच्यामध्ये
रेलेव्हंट स्किल डेव्हलप झाले पाहिजेत आणि ते सगळे आउटकम बेस्ड स्किल डेव्हलप झाले पाहिजे. आणि कशासाठी? फॉर फिनान्शियल सक्सेस. म्हणजे केवळ एज्युकेटेड आर क्रिएटेड, एज्युकेटेड आर कमिंग आउट ऑफ द कॉलेजेस, इन्स्टिट्यूट एवढ्यावर नाही चालणार आहे. तर त्यांना जॉब सुद्धा, त्यांना फिनान्शियल सक्सेस सुद्धा मिळालं पाहिजे. म्हणजे शिक्षणाबरोबर ते एवढे एबल झाले पाहिजेत की दे कॅन हॅव जॉब असेल, बिझनेस असेल, जे काय असेल ते अतिशय प्रॉमिनंट पद्धतीचं फिनान्शियल सक्सेस निर्माण करण्या इतके सक्षम ते झाले पाहिजे. दॅट इज व्हॉट एक्सपेक्टेड. म्हणजे त्याच्यामध्ये ऍक्सेस इन दिस टार्गेट, 2 things आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. वन, दॅट इज ऍक्सेस, जास्तीत जास्त लोकांना ऍक्सेस. आणि दुसरं स्किल ऍक्विजिशन. केवळ ऍक्सेस मिळून चालणार नाही, तर त्यांचं ऍक्विजिशन इतकं मोठ्या प्रमाणात झालं पाहिजे. अँड देन डेव्हलप कंट्री व्हायला कोणी अडवू शकत नाही. Coming to the next and the 5th target of this goal is eliminate all discrimination in education that is still prevalent, that is still observed. Okay, that is gender biases, the caste biases, region biases. Okay, even today there are so many biases practiced, and more specifically talking about India, and this is the fact. I'm not going to wait. Aditya लगेच बॅटरी दे मला. हे चार्जिंग पटकन. Wait please. My charging is going to. Please. Wait for a few minutes. Sir will join within a short time. सर अनम्यूट करा तुम्हाला. सर अनम्यूट करा. सर तुमचा माईक अनम्यूट आहे. सर माईक म्यूट आहे तुमचा, जनके सर. फोन करते वाटतं तुम्हाला. सर अनम्यूट करा आता आणि शेअर करा साहेब.
Okay, fine. Okay. Yes, fine. Okay, thank you. Am I audible now? येस सर, ऑडिबल. खरं म्हणजे होस्टने माझा त्याला अलाउच केलेलं नव्हतं, त्याच्यामुळे Okay. मला ते करता येत ओके सर, नव्हतं. अलाउड. Fine, thank you. Let me share the screen. Is it shared now? I hope the screen is shared. येस सर, शेअर. Fine, thank you. All right, we were talking about how the discrimination need to be eliminated and inclusiveness is required. Here are certain measures that the discrimination is made on the base of sex, age, race, color, ethnicity, language, religion, political or other opinions. See, this is very important thing nowadays in India. The student and all others also intellectuals may observe that political and other opinion also is the basis of discrimination. You see, this is also a serious issue to discuss and to focus on. What this program expect to get out of. Then national and social origin, that is also one of the thing that the migrants, okay, maybe not only in India, this is what I'm talking about, the world as well. Then property, birth, as well as persons with disabilities. Is the persons with disabilities may be also looked down, and that is also a kind of discrimination. Yeah, indigenous people, that is the tribal people, also even today are looked down. Okay, they are taken as the laymen and likewise. Okay, this is all type of discrimination should be eliminated. I mean, should be end with education, and that is possible only with education. दुसऱ्या कशानेही शक्य नाही मित्र, हे फक्त एज्युकेशन करू शकतं, दुसरं काही नाही. म्हणून एज्युकेशन कडे तेवढं लक्ष देण्याची गरज आहे. या दिस इज व्हॉट जेंडर इक्वॅलिटी we already talked about, that the government should observe and the people should observe. Government should make the policies aimed at overcoming the gender inequalities, and the people, society, we all should observe the same very strictly, right? And promote the health, women health, I mean gender health, justice and good governance to them at private and public places. And the sixth goal, sixth outcome target of this goal is universal literacy, and that is very important, that we have already been doing for. And this is global literacy is expected here, not merely लिहिता वाचता येणे एवढ्यावर इथे थांबणारी लिटरसी एक्सपेक्टेड नाहीये. ग्लोबल लिटरसी म्हणजे यू कॅन बी ऍटलीस्ट एबल टू कन्व्हर्स विथ द पीपल, communicate with the people globally if possible. And the last, seventh outcome, that is the target outcome, is education for sustainable development and global citizenship. You see, परत आपण त्या ग्लोबल वर आलेलो आहोत की हे लिटरसी केवळ आम्हाला लिहिता वाचता येण्यापुरती नाहीये, तर ग्लोबल सिटीजनशिप निर्माण करण्याकडे आगेकूच म्हणजे डेव्हलपमेंट अशी सस्टेनेबल होत गेली पाहिजे, फ्रॉम लिटरसी टू द ग्लोबल सिटीजनशिप. आणि याच्यामध्ये बिकॉज द वर्ल्ड हॅज बिकमिंग ए ग्लोबल विलेज, आणि ग्लोकलायझेशन हॅज बिकम ए व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रेंड अँड इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ लाईफ टुडे. ग्लोकलायझेशन म्हणजे ग्लोबल प्लस लोकल एकत्र घेऊन तर अनेक गोष्टी होत गेल्या पाहिजेत. दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड नाउ डेज.
केवळ ग्लोबल घेऊन चालणार नाही किंवा केवळ लोकल घेऊन भागणार नाही, तर दोन्हीचा एकत्रित अशा पद्धतीने पुढच्या डेव्हलपमेंटसाठी आवश्यक असलेले प्रवास आहे. आणि याच्यामध्ये वर्ल्ड पीस हा खूप महत्वाचा भाग आहे. अनलेस अँड अंटिल देर इज नो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट फ्रॉम एज्युकेशन फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, तर ते वर्ल्ड पीस इस्टॅब्लिश अपेक्षित पद्धतीने होणार नाही. ओके, ह्युमन राईट्स, तर हे जे वर्ल्ड एज्युकेशन हा आता ह्युमन राईटच झालेला आहे. केवळ मराठी, आज मराठी राजभाषा दिवस आहे, सर्वांना शुभेच्छा पण त्या दिवसाच्या. आणि सगळ्या भाषांना तितकंच वेटेज, तितकंच महत्व, आणि त्या भाषेमध्ये जे जे करण्यासारखं आहे ते करणं, आणि त्याचबरोबर फॉरेन लँग्वेज असेल, कुठली लँग्वेज असेल, तर त्या भाषेचं प्रॉस्पेक्ट सोडून त्या पद्धतीने त्या भाषेला डेव्हलप करणं. ओके, आणि एक ग्लोबल ह्युमन राईट्स या पद्धतीने समाज तयार होणं, की इंटरकल्चरल एज्युकेशन हा सगळ्यात आणखी महत्वाचा भाग आहे. की इंटरनॅशनल अंडरस्टँडिंग साठी इंटरकल्चरल एज्युकेशन सुद्धा खूप महत्वाची गोष्ट आहे. अँड दॅट इज व्हेरी इसेन्शियल नाउ डेज, बिकॉज country to country, society to society, the culture varies. त्यांच्या प्रत्येक समाजाच्या, कम्युनिटीच्या, प्रत्येक देशाच्या, त्यातल्या कम्युनिटीच्या कल्चर्स ह्या वेगवेगळ्या आहेत. आणि त्यांचा इन्क्लुझिव्हनेस, म्हणजे त्यांचं डायव्हर्सिटी, त्याचा इन्क्लुझिव्हनेस सुद्धा या ठिकाणी अपेक्षित आहे. ओके, आणि इंटरनॅशनल अंडरस्टँडिंग त्याच्याशिवाय येणार नाही. This is what is this program. Now let's see, there are certain means of implementation of this program, or this, at least this, talking about at least this goal, education, free quality education. And they are, the three things are how it can be implemented very effectively. आणि ते आहेत इफेक्टिव्ह लर्निंग एन्व्हायरमेंट. बघा, इथे टीचिंग शब्द वापरलेला नाहीये, लर्निंग शब्द महत्वाचा आहे. आणि ते इफेक्टिव्ह लर्निंग झालं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी एन्व्हायरमेंट क्रिएट करणं हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे ह्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचा, ज्याच्यामध्ये केवळ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर येत नाही, ऍडेक्वेट फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर येतच, पण सेफ इन्क्लुझिव्ह एन्व्हायरमेंट दॅट नर्चर लर्निंग फॉर ऑल. मग ते डिसॅबिलिटी असलेले पॉप्युलेशन असेल, जेंडर इक्विटी किंवा जेंडर इक्वॅलिटी, जेंडरचा भाग असेल, किंवा रिजन असेल, रिलिजन असेल, ओके, अदर ओपिनियन, व्हॉट एव्हर इट मे बी, या सगळ्या गोष्टीसाठी एन्व्हायरमेंट डज नॉट मीन ओनली नेचर, ट्रीज अँड फ्लावर्स अँड लिव्स वगैरे. एन्व्हायरमेंट दॅट इज व्हेरी हेल्दी एन्व्हायरमेंट फॉर एज्युकेशन शुड बी created, and then only effective learning is possible on the part of the youth and the children of the country. Second thing, for the implementation of this goal of this program, sustainable development, is scholarships. स्कॉलरशिप तर आपल्याला माहित आहे, आता हळूहळू बऱ्याच स्कॉलरशिप बंद होत चाललेल्या आहेत. म्हणजे आपण कोणत्या दिशेला चाललेलो आहोत असा प्रश्न निर्माण होतो. आपण सगळे अभ्यासू आहात, आपण त्याचा अभ्यास करणारच आहात. तर इथे हे अपेक्षित आहे या प्रोग्राम मध्ये, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. स्कॉलरशिप जास्तीत जास्त दिल्या गेली पाहिजे, आणि ती केवळ हायर एज्युकेशन किंवा केवळ सेकंडरी किंवा +2 नाही, सगळ्या अगदी प्रायमरी पासून तर हायर एज्युकेशनला तर आवश्यकच आहे. स्कॉलरशिप जास्तीत जास्त जनरेट केल्या पाहिजे शासनाने, इक्विटी त्याच्यामध्ये, आणि बिकॉज इट इज पब्लिक अँड देअरफॉर स्कॉलरशिप्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्कॉलरशिप शिवाय सगळा समाज कसा काय एका स्टेजवर, एका लेवलवर येऊ शकेल आणि एज्युकेशन घेऊ शकेल. अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग देअरफॉर. ओके,
येस, इक्विटी आहे, इन्क्लुझिव्हनेस आहे, क्वालिटी आहे, याच्यासाठी स्कॉलरशिप आवश्यकच आहे. केवळ पेपर डिग्री, आता तेच चाललंय, पेपर डिग्री म्हणजे ऍडमिशन घेणे आणि डिग्री घेणे, दॅट इज व्हॉट पेपर डिग्री. ओके, तर एवढ्याने काय एज्युकेशनचा हा कुठलाही टार्गेट किंवा कुठलाही बेनिफिट कोणालाही होणार नाही आणि कुठलंही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट त्याच्यात नाहीये. अँड द थर्ड थिंग इज टीचर एज्युकेटर सगळ्यात महत्वाचा एलिमेंट आहे. अर्थातच फिजिकल स्ट्रक्चर म्हणजे स्कूल बिल्डिंग आहेत, इफेक्टिव्ह लर्निंग स्कूल्स कॉलेजेस बिल्डिंग महत्वाचा भाग आहेच. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये स्कॉलरशिप असल्याशिवाय सगळे एकत्र प्रभात येणार नाही. आणि थर्ड थिंग की एक्सपर्टाईज एज्युकेटर म्हणजे टीचर, आणि तो पण एक्सपर्टाईज टीचर हवा असेल तर मग सगळ्या गोष्टी करायला लागतात. त्याचं ट्रेनिंग असेल, त्याचं म्हणजे सॅलरी असेल, या सगळ्या गोष्टी इथे अपेक्षित आहे. आणि त्यानंतरच इट इज पॉसिबल. टीचर्स एज्युकेटर शुड बी एम्पॉवर्ड, त्यांना एम्पॉवर करण्याची गरज आहे. ॲडेक्वेटली रिक्रुटेड, कमी शिक्षकांवर चाललेलं सगळं काहीच उपयोगाचं नाही. शो मस्ट गो ऑन सारखं चाललेलं आहे. नंतर आपण पाहतो सीएसबी वगैरे, हे खूपच नुकसान, खरं म्हणजे हानी होते आहे देशाची खरं पाहिलं तर. नंतर या adequately recruited and remunerated, motivated, professionally qualified and supported within well resource, म्हणजे तितके रिसोर्सेस सुद्धा ते एफिशियंट पण असले पाहिजे आणि इफेक्टिव्हली गव्हर्न सिस्टम सुद्धा निर्माण केली पाहिजे. हे सगळं निर्माण करण्यासाठी जे टीचर्स, एक्सपर्टाईज टीचर्स, स्कॉलरशिप आणि इफेक्टिव्ह लर्निंग एन्व्हायरमेंट, या 3 गोष्टी असेल तरच हे सगळे जे टार्गेट आहेत आपण पाहिलेले ते पॉसिबल होणार. देन ओनली वी कॅन ड्रीम फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. टू कन्क्लूड, आय जस्ट होप that we may break new ground and new dawn of the developed country, that is developed India. Thank you, Suryavanshi sir, for giving me the opportunity and to share my views at this occasion. Over to you. Hello. हा सर. With this, I put my say. येस सर. Thank you for giving me the opportunity. I thank the organizers. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. We are honored. We are honored to you have all with us. That was very informative and motivating speech, sir. Very useful guidance about skill development, relevant skill, quality education, gender equality, universal literacy, human right education, intercultural education, and more about that shared to us. These things is very useful to us. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. मी आजच्या कार्यक्रमाचे समारोपाचे अध्यक्ष आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य माननीय डॉक्टर व्ही.एस. पाटील सरांना विनंती करते की आम्हाला मार्गदर्शन करावे. हॅलो सूर्यवंशी सर. हॅलो, बोला. आवाज येतोय ना माझा? येतोय. Okay, thank you. I am delighted to welcome you all for this webinar. It is a matter of great privilege to be here before this gathering today on the issue of global importance that we can say as sustainable development. 21st century world is an increasingly globalized and interdependent world. The last decades has thrown up major global challenges that require a concerned global response for effective resolution.
Today's subject is the most pressing contemporary challenges faced by all of us. It is the need of time for sustainable development in the trinity of economic growth of country, energy resources which are non-replenishable and scarce, as explained deeply by one of our resource person, Dr. Sweta Madam. For all the problem created due to developments, nations are impelled to look innovative solutions, as was clear from Madam's speech. In this webinar, all of you have gained a deep insight about how to take step towards sustainability, overcoming issues on pollution, solar energy, deforestation, land degradation, renewable energy, and goals to be achieved to increase the sustainability and clean energy. I think the message of this conference given by our speakers is convincing. The environment and resources has been percolated in all our youngsters. Today, it was a good discussion on how to maintain sustainability without making any harm to environment. Our college organizes many student-centric activities for holistic and overall development for students, and in order to make our young generation aware of all the current issues. I hope this gathering has been a fruitful event for all the academicians, resources, researchers, and students, and this will make our young generation more focused and aware to conserve resources and sustain development. With these few words, I would like to stop here. Thank you very much. थँक्यू सो मच सर. मी सूर्यवंशी सरांना विनंती करते की आजच्या समारोपाचे आभार प्रदर्शन सरांनी करावे. A very good noon to all of you. Respected principal, resource person, all dignitaries, delegates and staff members and dear students. It seemed to be great pleasure, honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this seminar a very resounding success. First of all, I would like to give my hearty vote of thanks to our today's program president, Professor Y.D. Desle sir and Professor V.S. Patil sir for gracing today's seminar by giving presidential address. Thank you, sir, for your very thoughtful presidential address. Thank you, sir, for your very thoughtful, provoking, and interesting address. I would like to thank our distinguished guest, Dr. Sunil Kulkarni, Student Development Officer, Kavetri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon, for his great thoughts about sustainable development and giving this webinar to our college. I would like to thank resource person, Dr. Saunand Somasi, Assistant Regional Director, Indira Gandhi National Open University, Pune, for giving valuable guidance to our student. Again, I would like to thank resource person, Professor Dr. Sweta Khandelwal, Madam, from University of Rajasthan, Jaipur, for making this webinar meaningful and interesting. I would like to thank the chief guest for the valedictory function, Dr. Subhash Janke sir, for his gracious presence and guidance in a valedictory function. Thank you, sir. I thank our management, President Honorable Padma Kotecha Madam, and management representatives who graced with his guidance. We have been fortunate to assisted by our principal, Dr. Mangala Sabadra. You have been a constant support and you have given a lot of encouragement for all activities. Thank you, madam. I would like to express a vote of thanks to our staff members and students. We have made this webinar a grand success through their motivation and dedication. Thank you very much and have a nice day. Thank you, sir.